शून्य और डीएक्सिंग, इसमें जो सिमिलैरिटी है, ये जो एक तरीके का जो चीज है, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए आज से भी हमारे भारत में नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे अन्य अन्य देशों के लोग इस चीज और इस माध्यम को समझते हैं और इस चीज को आगे रोज करना चाहते हैं, इसके बारे में रोज सीखना चाहते हैं। और योगा जो है ये हमारे खुद के देश से आया है, हमारे भारत से आया है, तो उससे और गर्व की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। Over here, we have to understand that yoga has come from our own country. It's a part of our culture, it's a part of our heritage. And if we can understand that and if we can inculcate it into our daily lives, and the way to do that in a very simple manner, in a very easy manner, is something that we all should strive for and is the importance of International Yoga Day. So, over here, how Shunya is very closely related to it, how practicing Shunya daily can help you, reach this state of samadhi or make your daily life easy, is the way of what we will be discussing today. Yes, sir. आज योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। योग का हमारे भारत से बहुत प्राचीन रिश्ता है। यहाँ के हर व्यक्ति में, हर शहर में, हर कस्बे में, इस धरती के एक एक पर कहीं ना कहीं योग का एक समायोजन है और भारत की आत्मा में ये योग समायोजन है। Yes, sir. So I believe we can start the discussion. And Dr. Rajesh sir, Dr. Lim sir, there is a sort of discussion that we wanted to happen, want it to happen regarding the circumstances of how yoga and Shunya is very closely related, how people can sort of misunderstand Shunya in some certain way. So if we can start a discussion based on that basis and get questions also on the side by side, I guess it would be a good way to start. Yes, so good morning, Dr. Lim. So it is all up to us now to discuss on the whole concept of yoga. Yes, sir. So because it's now become an international day, now people are celebrating yoga. But the fact that they are celebrating yoga is very weird because what they are doing is not true yoga. So better put some light on that. So thank you, Rajesh, sir. So I think today is a very auspicious day, the World Yoga Day, and we are talking about yoga. Okay, yeah. Do you need any translation for my speech? Sir. Well, you can say the translation, okay? Sure, yeah. तो आज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही एक शुभ दिन की शुरुआत है। आज पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे करके इस चीज को सेलिब्रेट किया जाए। यस सर। Actually, Shunya is the true practice of yoga. Okay, yoga from the word yug. Yug means union. Okay, these two things compare. You union, you unite them together. It's yoga. शून्य एक सही तरीका है या एक तरीका है योगा का। योगा ये जो शब्द है ये एक वर्ड से आया है जिसका मतलब है जुड़ना, किस चीज का? शरीर और मन का। यस सर। Yoga, of course, is coming from India. Okay, and all of us know that the Xinjiang, the monk from China, they go to India, but very few people know that he go to India because of yoga. Okay, because he wanted to learn yoga chara. So हमें बहुत गर्व मानना चाहिए क्योंकि जो योगा का प्रैक्टिस है वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारी मातृभूमि भारत से आया है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोगों को चीन से सीखनी पड़ी थी, पर योगा एक ऐसी चीज थी जो योग का जो ये योग शास्त्र जो था या जिसकी जो पढ़ाई थी कहीं और से नहीं, हमारी मातृभूमि भारत से आई थी। यस सर। So we travel all the way to Nalanda. Nalanda that time is the center of yoga, and they call the practice Yogacara. The one who practices it is the Yogachari. Okay, the time they don't call yourself yogi. Yogi is a new term, but in the ancient time they call them Yogachari.
राइट। तो ये जो चीज है, जो योगा जो चीज है या उसकी जो पढ़ाई है, वो कहाँ से आई है? हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी से आई है। और पहले जमाने में लोगों को योगाचारा बोलते थे, यानी आप स्टूडेंट्स हैं, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप योगा की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कुछ लोग जिनको योगी कहा जाता है या जो एक पद उनको असाइन की जाती है वैसा है, बट पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, उनको योगाचारा ही कहा जाता था। यस सर। Yoga is talking about three level of union. Three level of union. The first union is to unite your mind and your body. That's the first union. योगा में भी 3 लेवल्स हैं, और जो सबसे पहला पद है वो यही है कि आप अपने मन और आपके शरीर को यूनाइट करते हैं, एक कर देते हैं। yes. Yeah. The second union is yourself and the world and the environment. So you union yourself and this world is the second union. जो दूसरा पद है वो ये है कि आपको और आपके जो आसपास वाली जो सराउंडिंग्स है, आपका जो एनवायरनमेंट है, उन दोनों चीजों को आप ज्वाइन कर देते हैं। यस सर। The third level is to unite your consciousness with the supreme consciousness. No, okay, that is the third union. और जो तीसरा पद है, और जो पद हर कोई पहुंचना चाहता है, वो यही है कि आपका जो शरीर है, आप जो है, और जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है इस दुनिया में, उस चीज से आप कनेक्ट होना चाहते हैं। yes, What supreme consciousness we had to some special session to talk about that. No, so basically, supreme consciousness is everywhere. No, it never born, it never die, it's always there. And some people call it God, some people call it Lord, some people call it Buddha, whatever you call it, it is everywhere, and it's the highest consciousness. We call it the supreme consciousness. जी। तो अब बात हो रही है सुप्रीम कॉन्शियसनेस की, तो यहाँ पर वो चीज क्या है? तो वो बहुत इसके बारे में सर का ये कहना है कि शायद हमें एक पूरा अलग सेशन लग जाएगा बात करने के लिए। हम कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग बुद्ध के नाम से जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से उस चीज को मानते हैं, बट वो एक ऐसी चीज है जो कभी जो कभी मर नहीं सकती, जो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, जो चीज हमेशा रहेगी, और उस चीज का जो साया है वो हमेशा इस दुनिया पर बना रहेगा। So, yes, sir. Yeah, today you look at many yoga schools, they are not yoga actually. They do not practice a true yoga. Okay, this a 3 level. They twisted it, to incognito. They completely lost the true meaning of yoga. आज दुनिया में बहुत सारे योगा स्कूल्स है, हर जगह पर हम ये देखते हैं कि योगा कोर्सेज होते हैं, योगा स्कूल्स होते हैं, पर वहां पर उस चीज को हम ट्रू मीनिंग ऑफ योगा या एक सही माध्यम से प्रैक्टिस नहीं कह सकते। वो इसीलिए क्योंकि वो इन तीनों लेवल्स को क्रश करके कोई एक अलग तरीके का जो टीचिंग होता है उस चीज को वहां पर सिखाते हैं। यस सर। No, first your mind and your body. You need to union your mind and body. So instead of union mind and body, they go and turn and twist and they go and do acrobatic thing. No, that is not yoga. That is acrobatic. No, so you go and twist yourself into some impossible posture. No, at the end of the day, you do not become yogacharin. You become acrobat. तो सर का ये कहना है कि आजकल जो भी योगा स्कूल्स है वहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है योगा स्कूल और एक टाइप के सर्कस में। एक्रोबेट वो बोलते हैं जो सर्कस में काम करते हैं, वहां पर उनको एक अलग अलग तरीके के पोस्चर्स होते हैं जिनमें उनको कभी शायद पैर बेंड करना पड़ता है, कभी शायद सर बेंड करना पड़ता है, अलग अलग पोजीशंस होते हैं, और कहा जाता है कि अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो आप योगा कर रहे हैं। पर वहां पर हमें ये बात समझनी है कि योगा और योगाचारी वहां पर बहुत डिफरेंस है, और वो सिर्फ एक एक्रोबैट्स यानी एक सर्कस जो करते हैं उस चीज का एक प्रदर्शन है, बल्कि वो सही योगा नहीं। यस सर। In Sunya, we also do some exercise, some practice exercise, to circulate our blood, to circulate our energy. We did do some exercise, some stretching. Some stretching is good for your body, but not overdoing it. Not overdoing it. शून्य में एक तरीके का ये टीचिंग है कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आपको आपकी बॉडी पे बहुत स्ट्रेस डालना है या कुछ करना है। उसमें भी एक लाइन है कि आपको कितना करना है और कितना नहीं करना है। आप ओवरडू ना करें, ज्यादा जितना जरूरी है उससे ज्यादा आपको नहीं करना। यस सर। So in Sunya, normally we have a preset of this thing. First, we swing our hand, swing the hand, swinging the hand. Swinging the hand is a very important exercise because it can circulate the blood in the body.
तो शून्य में भी जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रैक्टिस जो होती है, जो बताया था लास्ट टाइम, वो यही है कि आपको आपके हाथ को स्विंग करना होता है इस तरीके से। उससे क्या होता है, शरीर में सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होता है, एंड आपका जो खून है वो हर जगह में बॉडी में स्प्रेड हो सकता है या फैल सकता है। यस सर। So when you're free, you can shift your hand maybe 100 times or maybe 1,000 times. Okay. So we also have one beautiful testimony, I think in Kerala. Okay. So our Sunyati having some tumor. Okay. In the near to the armpit here. So he's swimming for 200 times. Then suddenly the hand becomes swollen up. The hand becomes swollen up. तो जो ये स्विंगिंग एक्सरसाइज है जिसके बारे में सर बता रहे हैं, तो वहां से ही केरला में एक टेस्टिमोनी था। एक पेशेंट था जिनको ट्यूमर था चेस्ट में, एंड जब उन्होंने ये स्विंगिंग एक्सरसाइज चालू किया अराउंड 200 टाइम्स, वो डेली अपना जो ये हाथ था इस चीज को स्विंग करते थे, तो उस रीजन से क्या होता है कि सर्कुलेशन वगैरह बॉडी का बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से उनके जो हैंड में मूवमेंट्स वगैरह थे वो इजीली स्टार्ट हो गए। यस सर। That is a good sign because the fruit, the blood already started to circulate now. So the blockage of say trying to push through, of course, it's stolen out. Actually, this is a good sign. तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप रोज सुबह उठ के ये एक्सरसाइज करें। अगर वहां पर बॉडी में कुछ सोरनेस या किसी तरीके की तकलीफ भी होती है तो आपको डरना नहीं है, कोई चीज का टेंशन नहीं लेना, आपको वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। एक सही तरीके से वो एक्सरसाइज करेंगे, जो तरीका बताया गया है उस तरीके से आप करेंगे, तो आपकी बॉडी में जो या शरीर में जो भी है ऐसे टफ स्पॉट्स होते हैं या ऐसी कोई तकलीफ होगी तो वो कम हो सकती है। यस सर। After 1,000 times now, then the tumor disappear. So this is a very good testimony here. Yes. तो उन्होंने, जिनको ट्यूमर था, उन्होंने ये चीज डेली करना शुरू किया, एंड एक तरीके से जब वो करते गए हर रोज, वो कभी कभी किसी दिन अराउंड 1000 स्विंग्स भी पर डे कर लेते थे। तो वो एक तरीके का एक अच्छा एक्सरसाइज था बॉडी में, और ये एक अच्छा टेस्टिमोनी है जो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, और या आप खुद भी उस चीज को अनुभव करके देख सकते हैं। यस सर। The exercise that we raise our hands slowly to the top and put it down slowly, raise it up slowly, put it out slowly, you know. Okay. Some people ask, why you do things so slowly for what? Actually, that is to circulate the energy of the body. जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज होती है शून्य प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, वो होती है कि आपको आपके हैंड्स को ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे लाना है, और उसको बोलते हैं हम स्विंगिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज होता है, इस चीज में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ये चीज इतना स्लोली क्यों करना स्टार्ट करें, या ये आप एक्सरसाइज इतना धीरे धीरे क्यों करते हैं, एक तरीके से आप इतना टाइम क्यों लेते हैं एक्सरसाइज करने को। वहां पर इस चीज का आंसर यही है कि जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो जब पहले एक्सरसाइज में खून रेगुलेट, यानी जो हमारा रक्त है वो चीज अगर सर्कुलेट हो रही है, तो ये एक्सरसाइज में हम ऊर्जा यानी एनर्जी, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा बॉडी में सेव या स्टोर करने की कोशिश करते हैं। यस सर। So when you raise your hand, you put it up slowly, you know, the fingertips, sometimes you have the tingling sensation, you know, it's a good sign. Got the energy, you know, started to circulate in the body. जो ये एक्सरसाइज पहली बार करते हैं या अगर आप शायद रोज कर रहे हैं, तो वो चीज का उनको ध्यान रहेगा, जब भी वो एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर आपको उंगलियों में यहाँ पर एक टिंगलिंग सेंसेशन आती है, यानी थोड़ी सी झुंझुनाहट महसूस होती है। और वो चीज अच्छी बात है, क्योंकि वो एक आपकी बॉडी के लिए साइन है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो आपकी बॉडी पर काम कर रहे हैं। यस सर। Of course, we do stress our body now, stressing our leg, stressing the body, stressing up. Stressing is good for health, okay? Because when you stress your body, we are pressing on the lymphatic system of the body. Okay, when you press the lymphatic system, and then you what I call circulate the lymphatic in the body. जब आप शून्य प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले भी आप जरूर स्ट्रेचिंग करिए। स्ट्रेचिंग बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसी तरीका एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो हमारी इम्यूनिटी से जुड़ा होता है। और ये चीज अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी, आपका लिम्फेटिक सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो स्ट्रांग होती है। यस सर। So when you stress your body, okay, to this thing, then you force your lymphatic to go in one direction, no? Then of course you cleanse the body, then it should detox your body, you know? Okay, that is very good to boost your immune system. तो जिस तरह वही बताया कि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जब आप स्ट्रेच करते हो तो वो एक तरफ जाने
जब आप स्ट्रेच करते हो आपकी बॉडी को तो वो एक तरफ समेट जाता है, एंड उस रीजन की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो स्ट्रांग होती है टाइम टू टाइम। तो स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज है ये आपको डेली करना है। यस सर। But many yoga school go to the extreme, you know. Okay, they twist and turn themselves to some impossible position, you know. Okay, it's not necessary, not necessary at all. तो बहुत सारे योगा स्कूल या योगाश्रम में सिखाया जाता है कि आपको अलग अलग पोजीशन लेना है, शायद आपके पैरों को आपके सर के पीछे डालना है, या बहुत अलग अलग इम्पॉसिबल जो पोजीशंस होते हैं वो आपको ट्राई करने पड़ते हैं, तभी आप एक योगी बन जाते हो या आप योगा अच्छे से कर पाते हो। तो वहां पर हमें समझना है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड सिंपल प्रोसेस। यस सर। The problem in India, many people they try to become guru, they try to become Baba. Okay, so they want to do something special, something that impossible, that only they can do, you know, that you cannot do. So they, I can do this, no, you cannot do. So you better take me as a guru. तो विश्व में, भारत में ये बहुत सारी एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोग, जो कुछ लोग होते हैं वो योगा और योगा के बाबा बनना चाहते हैं या गुरु बनना चाहते हैं। वहां पर ये वो लोग एक तरीके का प्रदर्शन करके बताएंगे कि देखिए मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं वो चीज कर सकता हूँ, और आप नहीं वो चीज कर सकते, इसलिए आप मुझे आपका गुरु मानिए। तो वहीं पर हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो चीज कोई भी चीज है, अगर वो आप कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, एंड उसी चीज को एक सही तरीके का योगा मान सकते हैं। यस सर। And then they put in a lot of name, they created a lot of form, the name and form, keep on adding into the yoga, you know, until it become a stupid exercise. उसमें एक बहुत तरीके का नाम आ जाता है, एक रूप आ जाता है कि ये एक अलग तरीके का योगा है, वहां पर एक अलग तरीके का योगा है, अन्य अन्य तरह के नाम होते हैं, अन्य अन्य तरह के तरीके होते हैं कि इसी तरह आप कर सकते हो, उस तरह आप नहीं कर सकते हो, और वो एक तरह का ब्रांड बन जाता है। यस सर। They give heavy name into the system, no, sometimes they even register the IP for the name and everything, you know. Okay, then they make themselves look very different, you know, with the bushy beard, with the turban, with all the funny stuff. So even with talk also trying to talk funny, but they laugh also, they laugh very artificially, you know. That is not yoga. तो जिस तरह उस चीज में नाम और रूप आ जाता है, तो उनके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कपड़े होते हैं कि हमें ऐसे ही होना है, वैसे ही होना है। तो वो एक तरीके का सही योगा नहीं है, और वो चीज एक सही तरह की सिखाई नहीं है या पढ़ाई नहीं है। यस सर। I always joke, you know, when you practice yoga, you become a good human being, you know. If you are not careful, you become donkey or you become monkey. अगर आप सही तरीके से योगा जो है उस चीज को अपने लाइफ में ले आते हैं, या एक सही तरीके से उसको प्रैक्टिस करना रोज स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मनुष्य बन जाते हैं। पर जब आप उस चीज में नाम रूप अन्य तरीके की चीजें ले आते हैं, तो वहां पर आप एक बंदर या एक गधे की तरह हो जाते हैं। यस सर। Some yoga school become the abstaining. They say, oh, they don't know the meaning of emptiness, but they abstain from everything. No, they don't want to do anything. They just sit there, everything. They don't want to do anything. Okay, this thing. Then they don't talk. Okay, they don't have eye contact. This is the thing. They don't allow you to ask questions. This thing. Then they become donkey. बहुत सारे योगा टीचिंग में ये सिखाया जाता है कि आपको सब चीज त्याग देनी होगी, आपको जो दुनिया है, दुनियाई जो जिंदगी है, उस चीज को त्यागना होगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस एक अलग तरीके से बैठना है, ध्यान करना है। बिल्कुल आप बाकी दुनिया से कांटेक्ट नहीं रख सकते, बात नहीं कर सकते, एक नॉर्मल जिंदगी जो है वो जी नहीं सकते। तो वो प्रैक्टिस जो है वो एक तरीके का बेवकूफों का प्रैक्टिस है, वो एक सही तरीका का प्रैक्टिस नहीं है। यस सर। So some yoga schools say, relax, no, why what to worry? Relax, no. So they drink, they take drugs, they dance, or put their hand up, then they roll their eyes up and looking upstairs, dancing, singing, no. Then they become monkey. बहुत सारे योगा स्कूल्स में एक तरीका होता है जहां पर वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि आपको टेंशन नहीं लेना है, सांसें लीजिए और टेंशन बाहर कर दीजिए। ऐसे अलग अलग तरीके की चीजें होती है। वहां पर आपको कुछ पीने के लिए दिया जाएगा, कुछ चैंट करने के लिए दिया जाएगा, और यही कहेंगे कि आप सब चीज छोड़ दीजिए, बस रिलैक्स करिए, आराम करिए। तो वो एक सही तरीके का टीचिंग या एक सही तरीके का प्रैक्टिस नहीं है। यस सर। We wanted to relax the body. We wanted to abstain from all the mental trouble. Okay, but there is a limit that you can go. You don't go to the extreme.
उसी तरीके से अगर आपको भी आपके बॉडी को रिलैक्स करना है, आपको भी अगर आपकी जो मन की जो परेशानियां हैं, अगर कोई चीज है जो आपको हमेशा टेंशन देती है या ऐसी कोई चीज है, अगर आपको उस चीज से भी बचना है, तो एक तरीका है, एक सही तरीका है उस चीज को अपनाने का या उस चीज को करने का। एक लिमिट तक वो चीज की जानी चाहिए। यस सर। Now come back to yoga and sunya. Okay, how to union your mind and body? That's very important. Okay, mind, body, how to union them together. अभी हम शून्य और योगा इस चीज के बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से हम हमारे मन और हमारे शरीर इन दोनों चीजों को जोड़ सकते हैं, और किस तरीके से इन दोनों के जोड़ से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमें बहुत सारी उससे चीजें जो हमारी लाइफ में है वो अच्छी हो सकती है। यस सर। How to understand your mind? How to understand your body? Is there a simple way? Okay, you can look into your mind. You can observe at your body. Can be a very simple method, no, to do these two things. तो जब हम इन दोनों के जोड़ की बात करते हैं, मन और शरीर की, तो वहां पर दो चीजें आ जाती है कि आपको आपके मन के अंदर झांक के देखना है, आपको आपको समझना है कि आपका माइंड किस तरह रिएक्ट करता है, और दूसरी तरफ हम आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, शांत तरीके से देखना है कि किस तरह आपकी जो शरीर है वो अलग अलग चीजों में, अलग अलग सिचुएशन में रिएक्ट करती है। यस सर। Fortunately, there's something, then you can observe into your mind, facing out to your body. It is your breathing. Your breathing. तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर हम दोनों चीजें एक साथ करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारे शरीर में एक ऐसी प्रतिक्रिया जो रोज चलती है, जो हम हमेशा कर रहे होते हैं, और वो होता है जो सांसों का आदान प्रदान होता है। अगर वो चीज पे हम ध्यान कर पाए, तो वहां पर हम हमारे मन में भी देख सकते हैं क्या चल रहा है, और हम हमारे शरीर को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। यस सर। Within your mind and body, there's breathing. Okay, the breathing can affect your mind. The breathing also can affect your body. मन और शरीर के बीच में कॉमन जो चीज है वो है ब्रीदिंग प्रैक्टिस, सांसों का आदान प्रदान। और जब हम इस पर ध्यान करते हैं, तो हम हमारे मन में भी देख सकते हैं और हम हमारे शरीर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस सर। By observing the breathing, you can observe your mind. By observing the breathing, you can observe your body. मन पर ध्यान रखते रखते हम शरीर पर भी ध्यान रख सकते हैं, और शरीर पर ध्यान या शरीर को अच्छे से देखते हुए हम हमारे मन के जो अंदर की हलचल है या जो बात है उस चीज को भी समझ सकते हैं। यस सर। Like pulse taking, okay, as a doctor, when the patient come, we take the pulse. And for the pulse, you know what the condition of the body. So if the pulse is beating boom, 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 boom very fast, maybe he's having fever. जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पर डॉक्टर्स आपका पल्स चेक करते हैं, या आपके हाथ को ऐसे पकड़ कर, या आपका बीपी चेक करते हैं, आपका पल्स चेक करते हैं। और अगर आपका पल्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा, या आपका दिल जो है बहुत तेजी से भाग रहा होगा, तो वहां पर डॉक्टर समझ जाता है कि ठीक है, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, या आपके मन में कोई हलचल है, या ऐसी कोई टेंशन की बात है जो आपको परेशान कर रही है। तो इसी वो एक चीज का एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी जो सांसों का जो आदान प्रदान है, या जो ये बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक है, वो हमारे मन और शरीर दोनों से रिलेटेड है। यस सर। The pulse is weak and it's soft. I mean, the body is very big. The metabolism is very low. So from the pulse taking, we can know the condition of the body. और अगर आपका जो पल्स है वो अगर बहुत ज्यादा वीक रहेगा, तो वहां पर एक बात समझ आती है कि शायद बॉडी वीक है, या बॉडी में अच्छे से ब्रीदिंग नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं जहां पर हम ब्रीदिंग टेक्निक से पता कर सकते हैं कि मन और शरीर दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है या क्या चीजें चल रही है। यस सर। So similarly, by looking at the breathing, you can know the state of the mind. So if the breathing is strong, it's hard, it's supposed to mean the mind is agitated. उसी तरीके से अगर आप बहुत जोर जोर से सांसें ले रहे हैं, या डीप ब्रीदिंग जो बोलते हैं वो कर रहे हैं, या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वहां पर डॉक्टर को ये भी समझ जाता है कि आपका जो मन है, या आपके दिमाग में बहुत सारी तकलीफ है, या आप बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे हैं, या कोई तो प्रॉब्लम है जो आपके माइंड को परेशान कर रही है। यस सर। So if the breathing is soft and calm, it means your mind is also relaxed and calm. और अगर आपकी ब्रीदिंग जो होती है वो एक
स्थिर तरीके से होती है, यानी काम होती है, बराबर से स्लो अच्छे से जारी होती है, तो तब समझ आ जाता है कि आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, वो भी एक बहुत ही काम अवस्था या एक ऐसी इसमें है जहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है। यस सर। Then whether your mind is focused or not, okay, so we ask the Sunyati to count the breathing. Okay, counting the breathing is observation of breathing. It's a kind of observation. जब आपका मन जो होता है वो एक तरीके से काम होता है, तो वहां पर हम शून्य प्रैक्टिस में उस चीज को काउंट करना बोलते हैं। और जब हम ये काउंटिंग मेथड कर रहे हैं या ये रिवर्स काउंटिंग मेथड जब करते हैं, तो वो एक तरीके का साधन है जहां पर हम हमारे जो सांस है उस चीज पर ध्यान कर सकते हैं, उस चीज पर फोकस कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस We some school in India, okay, so they go to practice the meditation, or they say you focus on the 3 points here, and you pull your breathing as long as possible. We do practice that. तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, विश्व में, अलग अलग देशों में, जहाँ पर एक तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। उसमें एक तरीका है कि शायद आपको आपके कोई बॉडी के पार्ट पर या किसी 3 तरीके पे, आप कोई 3 पॉइंट पे आपको ज्यादा ध्यान करना है, फोकस करना है, एंड वो वहां पर फिर आपको आपकी सांसें खींचनी होती है, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस देना होता है, या एक अलग अलग तरीके की चीजें करनी होती है टू गेट दैट स्टेट ऑफ पीस, ताकि आप उस स्थान पर पहुंच जाए जहां पर आपका मन शांत रहे। यस सर। When you take pulse, as a doctor, you do not interfere with the pulse. Let the pulse beat as it is. When you know what is the condition of the body, you do not interfere the pulse. So वहां पर आप पल्स जो होता है या जो आपका काउंटिंग होता है उस चीज के साथ इंटरफेयर करते हैं, और वो एक सही तरीका नहीं है। वो जो ऐसे तरीके होते हैं जहां पर आपको आपकी बॉडी को स्ट्रेस देना होता है, आपको आपकी बॉडी पर एक तरीके का प्रेशर डालना होता है, वो सही तरीका है। यस सर। So you as a yogacharin, you as a sunyati, you sit down to meditate, okay, this thing. So you observe your own breathing. Observe the breathing, not practice the breathing, observe the breathing as it is. तो ये बात शायद समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, कि आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये चीज आपकी बॉडी में नॉर्मली होता है, हम हर समय हर मिनट ब्रीथ कर रहे होते हैं या सांस ले रहे होते हैं, पर यहाँ पर आपको ब्रीदिंग को प्रैक्टिस नहीं करना है। एक शून्यति, एक योगचारी होने के नाते आपको इस चीज को ऑब्जर्व करना है, यानी आपको आपकी जो सांसों की प्रक्रिया, जो सांसों का जो आदान प्रदान है, इस चीज की जो प्रक्रिया है, वहां पर उस चीज पर आपको ध्यान करना है, उसे ऑब्जर्व करना है। यस सर। Yesterday I have a midnight this live with Latin America until 2 to 3 o'clock in the morning. This thing they are asking me Q&A how to do diaphragmic breathing, how to breathe with diaphragm and everything. I said no, don't deal with all this kind of breathing. Yeah. तो कल एक्चुअली सर का लैटिन अमेरिका में काफी देर तक एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, शून्य के बारे में उनका टॉक था। वहां पर बहुत सारे लोगों ने उनको पूछा कि हम इस तरह ब्रीथ कैसे कर सकते हैं, या हमको डीप ब्रीदिंग कैसे करना है, या जो डायफ्राम होता है जो हमारे लंग्स के नीचे होता है, उस चीज वहां से ब्रीथ कैसे करना होता है ताकि हम एक लंबी सांस ले सके। तो वहां पर सर का यही जवाब था कि आपको ये सब नहीं करना है। सिंपल जो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है, जो आप अभी बैठे बैठे यहाँ पर सांस ले रहे हो, उस चीज पर बस आपको ध्यान करना है, उसे ऑब्जर्व करना है। यस सर। You this reverse counting your breathing, how you're breathing. Okay, so you can count from 39 to 0. I mean, you do not have depression. Those people have depression. They can't even count 39 to 0. I mean, their mind are not focused. No, I mean they have depression. As simple as that. बहुत आसान तरीका है इस चीज को समझने का, और वो यही है कि आप जब आपकी जो सांस है उस चीज को आप ध्यान करते हैं, वहां पर अगर आप उल्टी गिनती स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 9 से 0 तक हो सकती है, 99 से 0 हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो 9 से 0 भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से, या एक साथ में, या 2 मिनट में, या 3 मिनट में, जितना भी उन्हें टाइम लगता है। और जब आप ये नहीं कर पाते तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है, या एक बहुत क्लियर एक मार्क है कि शायद आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। यस सर। Sometimes ask me, no, Dr. Lim, what can I do? My mind is disturbing, I'm worrying, I am this, I am that. No, you say, which is no, you just count your breathing, keep on counting the breathing. No, whatever feeling come to you, you ignore them. No, count your breathing.
बहुत सारे लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि मेरा मन विचलित है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, परेशानी है लाइफ में रिलेटेड टू एनीथिंग, तो वहां पर मुझे क्या करना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो आपके लाइफ में लाई है, जो शायद चेंज कर सकता है आपकी जिंदगी, और वो यही है कि आपको आपकी ब्रीदिंग को काउंट करना है कंटिन्यूअसली, जितना हो सके उतना। एक बार करिए, 2 बार करिए, जितना कर सकते हो आप उतना करिए, जब तक आपको चेंजेस लाइफ में दिखते नहीं। यस सर। Whether you're happy, whether you're not happy, whether you're excited, whether you're depressed, no, don't concern about that. No, count your breathing. अगर आप खुश है, अगर आप डिप्रेशन में है, अगर आप सैड है, या अगर आप एक ऐसी स्टेट में जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से मुझे रिएक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें साइड में रखते हुए आप आपकी जो ब्रीदिंग की जो ये टेक्निक है उसको काउंट करें, उस पर फोकस करें, उसको ऑब्जर्व करें। कुछ भी हो जाए पर आपको वो प्रैक्टिस जो है आपकी लाइफ से निकालनी नहीं है, वो चीज को कंटिन्यूसली करते रहे। यस सर। That is a central practice of yoga. वही योग का, या योग का ये जो योगा की जो टेक्निक है उस चीज की, वो एक सेंट्रल प्रैक्टिस है, वो मेन प्रैक्टिस है उस चीज की कि आपको आपकी सांसों पर ध्यान करना है, आपको आपकी सांसों पर फोकस करना है और काउंट करना है। यस सर। Many people they very happy with me. They Dr. Lim, wow, thank you very much for inventing such a simple technique to us. I said, no, my language though. This is not invented by me, no. It come all the way from Kumara Jiva. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये प्रैक्टिस डॉक्टर लिम ने खुद बनाई है, या और फिर उनको उस चीज के लिए जाके थैंक यू बोल देते। तो सबका यही कहना है कि वो चीज उन्होंने नहीं बनाई, ये तो जो प्रैक्टिस है ये हमारे ही भारत से आई है, ये हमारे ही कंट्री से आई है, तो उस चीज के लिए वो यही कहते हैं कि हमें उनको थैंक यू करने की जरूरत नहीं। यस सर। Kumara Jiva, he studied and graduated from the Taxila University, and eventually captured by the king of China and bring it to China, and he brought this reverse counting, to China. जो ये सिंपल से ये जो टेक्निक है जिसको हम शून्य टेक्निक कहते हैं, ये हमारे भारत से आई है। कुमार जीवा की ये बहुत ही फेमस प्रैक्टिस है जो हमारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी से आई है। तो वो चीज को अब आगे जाके इस दुनिया में स्प्रेड किया गया है, चीन तक ये बात गई है, बट ये आई एक जो इसका जो ग्रोथ है या इसका जो बर्थ हुआ है वो हमारे ही देश से हुआ है। यस सर। Kumara Jiva is a grand student of Nagarjuna. Okay, that's why we also respect Nagarjuna a lot. कुमार जीवा जो थे वो हमारे ही नालंदा यूनिवर्सिटी जो भारत में है उन्हीं के स्टूडेंट हैं, एंड वहीं पर से उनका वहां पर ही उनकी जो टीचिंग्स है वो स्प्रेड हुई है। यस सर। And of course, Nagarjuna is then traced on the way to Buddha. That's why this reverse counting. We have a very long lineage, we have a very long lineage of a tradition until today. It's not my invention. तो ये जो प्रैक्टिस है ये वहीं से आई है, और बहुत पुरानी जो प्रैक्टिस है, कहीं बीच में खो गई ये प्रैक्टिस और हमें पता नहीं था, और वही है जो आप सर अब आके आप सबके सामने हमें बता रहे हैं। यस सर। Also, Sunya and so yoga, it is a practice, it is not a religion. It has nothing to do with religion practice. Nothing. एक और बात है यहाँ पर कि शून्य योगा ये जो चीज है ये एक तरीके का धर्म नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो आप आपकी डेली लाइफ में कर सकते हैं। इसका धर्म से या कोई कास्ट या कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। यस सर। But it prepare you, it prepare you to become a good Buddhist, a good Muslim, a good Christian. That is true. You prepare yourself for good religious people, but it's not religion. पर ये चीज आपको अगर आप डेली शून्य प्रैक्टिस करते हैं और इस चीज को आपकी लाइफ में ले आते हैं तो वहां पर आपको ये एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा मुस्लिम, एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा सिख, एक अच्छा ईसाई बनने में मदद कर सकता है। यस सर। Yeah. So then you focus your mind on this breathing now. So this method is coming from one sutra called Maha Anapanasmriti Sutra. We call it MAS Sutra. तो ये जो यस सर, तो ये जो टेक्निक है जो जिस चीज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं ये कहीं और से नहीं, एक अलग अलग तरीके के जो वेदास होते हैं उसी में से एक वेदा है, वहीं से ये चीज आई है और वहीं से सर ने भी सीखा और आज हम सबसे शेयर कर रहे हैं। यस सर। So in MAS, it says if you do not control your mind, the mind going to control you.
तो ये जो टीचिंग है वो यही कहता है कि अगर आप आपके मन को नहीं कंट्रोल करते हैं, अगर आप आपके मन पर एक तरीके का कंट्रोल नहीं तो वो चीज आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर सकती है। यस सर। To control your body, the body also going to control you. और अगर आप आपके शरीर को नहीं कंट्रोल कर सकते, अगर आप आपकी मन और शरीर दोनों चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो चीज आप पर आपको ओवर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है। यस सर। So how to control your mind? You control your mind by observing the mind first, observing the mind. तो अगर आपको आपके माइंड, आपका जो मन है उसके साथ आपको दोस्ती करनी है या उसको कंट्रोल करना है, तो पहली चीज यही है कि आप उसको ऑब्जर्व करें, आप उस पर ध्यान दें जितना हो सके उतना। यस सर। Yeah. You observe your mind by observe the breathing. You observe the breathing by counting the breathing. तो आप इस चीज को कैसे कर सकते हो कंट्रोल? ये एक ही तरीके से है कि आप आपकी ब्रीदिंग, आपकी जो सांसें है उस चीज को आप ऑब्जर्व करें, उस चीज पर आप ध्यान करें, फोकस करें, और वो करने के लिए आप उल्टी गिनती जो है वो भी कर सकते हैं। यस सर। So everything boils down to breath counting. Count your breath. When you count your breath, you have to observe your breathing. When you observe the breathing, you are observing your mind. Okay. When you are observing the mind, you control the mind. That is very important. तो जब आप ये ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं तो आप आपके मन और आपके जो शरीर है, इन दोनों चीजों में से जो कॉमन चीज है सांसों का लेना देना, उस चीज पर आप ध्यान करते हैं, उस चीज पर आप फोकस करते हैं, और इसी चीज से आप इन दोनों चीजों पर एक कंट्रोल पा सकते हैं, एक अच्छे तरीके से, जो चीज आगे जाकर भी आपके साथ रहेगी। यस सर। Nowadays we have many complicated meditation school. No, they teach you this technique, that technique. They use this kind of meditation, the kind of meditation. They looking at the candle. They do all these things are wrong practice. No, the right practice is observe your breathing. तो अब आजकल बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो अलग अलग तरीके के ब्रीदिंग भी सिखाते हैं, कि आपको इस तरीके से सांस लेना है, इस तरीके से आपको इतने टाइम तक आपको सांस आपकी पकड़ कर रखना है, या उसके बाद जाने। तो ये एक अलग अलग तरीके के स्टडीज है, पर अगर आपको किसी तरीके से भी एक प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न डेवलप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपकी जो ब्रीदिंग है उस चीज पर आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। Many times, in India, in for the whole world, some people they already practice meditation for 10 years, 15 years, or this thing now. Yet they are very emotional. They have a lot of emotional problem. They come to us are full of emotional problem, and we feel very funny. After meditation for 10 years, 15 years, you should be very stable in emotion. Why they become so emotional? तो एक क्लासिक एग्जाम्पल कह सकते हैं जहां पर लोगों को तकलीफ होती है, वो ये होता है कि वो 10 साल तक, 15 साल तक बहुत अच्छी तरीके से ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत एक इमोशनल इंसान हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो उस चीज के बाद जब वो डॉक्टर लिम के पास आते हैं या ऐसे सवाल पूछते हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आपने इतने साल तक ध्यान किया, इतने साल तक मेडिटेशन किया, हर चीज से अपने आप को अलग रखा, फिर भी आपका जो मन होना चाहिए ऐसे समय में वो एक बहुत स्थिर तरीके का मन होना चाहिए, बहुत काम होना चाहिए, बट फिर भी आप इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं? ये चीज का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। यस सर। Because instead of observing the breathing, they practice the breathing. Okay, so they pull your breathing. Sometimes they have they breathe a very funny way. So of course they cannot come to your mind. No way. तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आता है वहां पर, क्योंकि जब वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक तरीके की ऐसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं जहां पर शायद वो सांस अलग तरीके से ले रहे हो, या बहुत जोर से ले रहे हो, या बॉडी पे स्ट्रेस डाल रहे हो, या माइंड पे स्ट्रेस डाल रहे हो। वो जो मेन जो चीज होता है जहां पर अगर आपको आपके मन पर ध्यान रखना है, अगर आप वो चीज नहीं कर पाते हो, तो आप किसी तरीके से आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। यस सर। Instead of observing the feeling, they practice the feeling, or they want to feel its way, they want to feel love, they want to feel compassion. No, we don't practice love and there's a feeling, love and compassion will come automatically, You do not practice, okay? You just observe your feeling, but they practice the feeling, When they practice feeling, they become emotional. They become emotional. यस सर।
तो बहुत ये वही वही एक टॉपिक बार बार उठ के आता है। आपको बहुत लोग ये चीज पूछेंगे भी जब भी आप उन्हें अगर शून्य के बारे में बताएंगे, या ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जहां पर मुझे लोगों ने पूछा है कि मैं इस तरीके से सांस लूं, या मुझे भी खुद पहले ये डाउट था, क्योंकि उसी तरीके से हमें सिखाया जाता है कि जब भी आप ध्यान करने बैठे तो आपको जोर से सांस लेना है, या आपको सब चीज भूल जाना है, या आपको एक तरीके से आंखें बंद करनी है, कोई एक चक्र देखने की कोशिश करना है। ऐसी चीजें आपको सिखाई जाती है। आप टीवी पर देखते हो या न्यूज चैनल्स पे आता है अलग अलग जगह पे, या न्यूज़पेपर्स में अलग अलग जगह पे इसी तरीके से यही कहा जाता है कि अगर आपको योगा प्रैक्टिस करना है तो आपको कोई चीज को देखना है, या आंखें बंद करनी है, या बहुत जोर से सांस लेना है, 5 सेकंड तक सांस पकड़ के रखना है। तो ये सारी जो टेक्निक्स है अगर आप करते हैं तो आप आपके मन और आपके शरीर दोनों पर एक तरीके का स्ट्रेस लाते हैं, और उस के वजह से आप जो मेन प्रैक्टिस है जहां पर आपको सिर्फ ध्यान देना है और उल्टी गिनती करनी है, वो चीज आप नहीं कर पाओगे। यस सर। Yoga, we say there are pancha skandhas. Even there are 5 hindrances that stop you from doing good yoga. There are 5 hindrances. Pardon, sir, can you repeat, please? 5 obstacles, pancha skandhas. 5 obstacles that stop you from doing good yoga. अगर आपको सही तरीके से योगा करना है तो वहां पर ऐसी एक 5 परेशानियां आ सकती है जो शायद आपको योगा अच्छे से करने से मना कर आपको अच्छे से योगा करने में आपको तकलीफ दे सके। तो वहां पर ये जो 5 ऑब्स्टिकल्स है या जो 5 परेशानियां वो क्या होती है, अब हम आगे देखेंगे। यस सर। It's your body. Okay, your body is not your friend, you know. Because your body always try to do harm, try to do many funny things now. Okay, so if you cannot control your body, you cannot control your mind. So your body is the first obstacle. तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल जो है, जो शायद बहुत लोगों के लिए हैरानी की बात भी होगी, वो यही है कि आपका शरीर ही आपको ये चीज करने से रोकेगा। आपका मन, आपका शरीर हमेशा विचलित रहता है, अलग अलग चीजें करने की कोशिश करता है। तो वहां पर अगर आपको सही तरीके से योगा करना, सबसे पहली परेशानी है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो यही है कि वो आपका मन है, आपका शरीर है। यस। So the second obstacle is a feeling. You're feeling joy, you're feeling pains, you're feeling bliss, you're feeling guilty. All this kind of feeling is the obstacle to your practice. दूसरा जो तरीके की परेशानी आप देख सकते हो वो ये होती है कि जो आपकी मन की जो फीलिंग्स होती है, अलग अलग तरीके की फीलिंग होती है। कभी शायद आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, कभी आपको बहुत दुख हो रहा है, कभी आपको किसी चीज का रिग्रेट है, कोई चीज का गिल्ट है। ये जो अलग अलग तरीके के फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, वो चीज हमारी सेकंड परेशानी होती है। यस सर। Third is your thinking, you know. Okay, you're thinking to get rich quick. You're thinking of doing this, thinking of doing that. There's too many thinking, no. That is an obstacle. तीसरी जो चीज, सर, इज दिस आवर थर्ड ऑब्स्टिकल, थिंकिंग? Yeah. The fourth one. यस सर। जो हमारी तीसरी परेशानी होती है वो ये होती है कि हम शायद बहुत सोचते हैं, और ये जो थिंकिंग का जो एक ज्यादा ओवर थिंकिंग जो होता है वो आजकल बहुत सारे लोगों की तकलीफ है, और वो यही है कि आप बहुत उस चीज को पर ध्यान देते हैं, आप बहुत उस चीज को बार बार सोचते हैं। तो ये हमारी तीसरी परेशानी है। यस सर। The fourth one is a wrong action. Okay, you do this thing, you do a lot of immorality thing, you know, you do not follow the morality code, you know, you keep on doing all the funny thing, you know, that is an obstacle. Yeah. जो हमारी चौथी चीज होती है जो शायद हमारे लाइफ में परेशानी ला सकती है, हमें योगा या शून्य करने से रोक सकती है, वो ये होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेते हैं और फिर उस चीज के बारे में सोचते हैं। हम ऐसी बहुत सारी हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो मॉरल कोड के हिसाब से नहीं होती, या जो एक सही तरीका है उस चीज के हिसाब से नहीं होती है, और वहां पर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यस सर। The fifth obstacle is your mind. Buddha said, your mind is not your friend, you know. Your mind is not your friend. Your mind is the activity of your brain, you know. It's not your friend. Okay, it's like it keep on coming disturbing you, you know. I give you this idea, give you that idea. Okay, when you practice reverse counting, try to block your reverse counting. You know? So your mind is not your friend. It always come and disturb you. यहाँ पर अगर हम फिफ्थ, हमारी जो बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही जो सच्ची बात है वो ये है कि हमारी जो फिफ्थ परेशानी होती है या जो 5वीं परेशानी होती है वो ये है कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, वो हमारा दोस्त नहीं है। यहाँ पर वो हमेशा हमें परेशान करने की ही कोशिश करता है, हमेशा हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। और वो चीज बुद्ध ने भी कही है कि ये जो हमारा जो मन है वो हमारा दोस्त नहीं है, उल्टा इंस्टेड वो हमें हमेशा परेशान, हमेशा एक हमारा जो ध्यान है वो भटकाने की कोशिश करता है।
और यही हमारी पांचवी परेशानी। यस सर। So whether a school is a right yoga school or wrong school, you look know. If they practice on the body, if they practice on the feeling, if they practice on what they call on the thinking, if they practice on the action, the ceremony, and all the action, okay, or a lot of chanting and all the action, or they practice on the mind, that is a wrong yoga school, You cannot have any achievement by practice the hindrance. बहुत सारी ऐसी स्कूल्स है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो अलग अलग तरीके से इन पांचों चीजों पर ध्यान रखते हैं और आपको कहते हैं कि ये चीजों पर आप अगर योगा प्रैक्टिस करेंगे तो ये परेशानी आपकी लाइफ से चली जाएगी। पर अभी वहां पर हमें ये चीज समझना है कि इन पांचों चीजों पर प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है और इस चीज से आपको कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। यस सर। Some yoga school, as they told, they twist and turn your body, they try to turn the body and to become enlightened. No way. You cannot become enlightened by twisting yourself into acrobats. No way, no way. बहुत सारे ऐसे योगा स्कूल्स है जो एक तरीके से आपको ये सिखाएंगे कि आपको आपकी बॉडी को इस तरह मोड़ना है, उस तरह मोड़ना है, आपको ये पोजीशन प्राप्त करना है, आपको वो पोजीशन प्राप्त करना है। और वो एक बहुत ही सिंपल तरीका है जहां से हमें समझना है कि जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज से आपको जो मन का और जो शरीर का जो शांति है या जो एनलाइटमेंट है वो चीज आप ये सारी एक्रोबैट्स या ये सारी जो सर्कस वाली हरकतें करके आप वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते। Some school, they practice, you get a breeze, you get a breeze, you get a pressing, you get a breeze, the feeling. That one also, you cannot become enlightened by feeling. So, बहुत सारे योगा स्कूल्स है वहां पर इस तरीके से सिखाया जाता है कि आप ऐसे तरीके से सांस ले, अलग तरीके से ले, या आप अगर ये चीज इतनी बार करेंगे और इतने टाइम दिन में करेंगे, इतने टाइम के लिए करेंगे तो आप एनलाइटमेंट जो है या जो मोक्ष है वो प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर ये चीज जो है ये सच नहीं होती है। यस सर। Yeah, today because of time constraint, we cannot go into details of the 5 hindrances. So in one day, we are going to put into this thing. So that control your mind, okay, to observe your breathing, count the breathing. This is the only way to control your mind. और अगर आपको आपकी माइंड, आपको जो मेन चीज है आज जो हम डिस्कशन करना चाहते थे वो यही है कि योग के बीच में आता है आपका मन और आपका शरीर, और इन दोनों चीजों के बीच में आती है आपकी जो सांसों की जो प्रक्रिया वो। और इस चीज को अगर आप पर ध्यान रखना है, अच्छे से फोकस करना है, तो सिंपल तरीका यही है कि आप उल्टी गिनती स्टार्ट करें और आपकी जो नॉर्मल सांसें चल रही है, आपको जोर से सांस नहीं लेना है, आपको आपकी बॉडी पर स्ट्रेस नहीं डालना है, तो नॉर्मल आपकी जो सांसें चल रही है उस पर ध्यान दें और उल्टी गिनती स्टार्ट करें। यस सर। Then to control your body, you have to observe the what they call your action. So we have this Panchasila. Okay, the 5 precepts. You have to observe to control your body. और जब हम हमारे शरीर को कंट्रोल करने की बात करते हैं या शरीर को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पंचशीला होते हैं, यानी जो 5 टेक्निक्स है, और वो ये है। यस सर। Yeah. So first, you do no harm, or you don't go and harm yourself, harm your family, harm this thing. You should love yourself, love your family. Okay, your environment. Do not harm the environment. Do not harm the society. First, do no harm. सबसे पहली सीख यही है कि अगर हमें सही तरीके से इस चीज को करना है तो हमें हमारे आस पड़ोस, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स या हमारी सोसाइटी में किसी तरीके की गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है, किसी तरीके से किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, सबसे प्यार से रहना है, सबसे एक तरीके का अच्छा जो रिश्ता होता है वो चीज हमें मेंटेन करके रहना है। यस सर। Second, don't take what does not belong to you. Don't go and take other people's things. No. जो चीज आपकी नहीं है वो चीज पर आप नहीं लेने की कोशिश करें, या आप उस चीज से ऐसी जो प्रैक्टिस होती है जो गलत तरीके का मॉरल कोड होता है उससे आप बचने की कोशिश करें। ऐसा। The thing is that do not disrupt harmony. Keep the harmony in the family. Keep the harmony in the society. Do not go and harm the harmony. एक जो दूसरी तरीके की प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप किसी तरीके से जो शांति है या समृद्धि जो हमारे समाज में बनाई गई है, जो आपके घर में है, उस चीज को आप खराब करने की कोशिश ना करें। वहां पर आप ऐसे सर्टेन तरीके से बिहेव ना करें जिससे लोगों में अनबन हो जाए या लोगों में कोई बुराई हो या ऐसी कोई फीलिंग्स आ जाए जो अच्छी नहीं है। तो ऐसी चीजों से आप बचे रहे, ये सारी चीजें ना करें। यस सर। False, no. Do not making false claim. Or do not
lie and sinner, do not do all this kind of funny talking to cheat people, no? Okay, be truthful to yourself. Sir, this is Truthful. the third teaching, right? Do not. Third, yeah, third one, right? Fourth one. Okay. Third one is the harmony. Third one is the harmony. The fourth one is do not making false claim. ओके जो चौथी प्रैक्टिस है वो ये है कि हमें किसी तरीके से झूठ नहीं बोलना है, या एक फॉल्स क्लेम जो होता है जहां पर हम चीजों को झूठ कहते हैं या थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो चीजें हमें नहीं करनी है। चीजें बड़ी सिंपल रखनी है और जितना हो सके हमें सच के साथ रहना है, खुद से भी और लोगों से। यस सर। Never claim yourself, no, the representative of God. Okay, you are the prophet, or someone is a prophet. No. Don't make the kind of claim. No. Accept like Prophet Muhammad, that Jesus, everything is okay, but don't simply claim anything other than that. No. तो हमें किसी तरीके से एक क्लेम नहीं करना है या खुद को एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना है, या किसी चीज का गुरु या किसी चीज का एक तरीके से बाबा, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी। जितना हो सके उतना चीजों को सिंपल रखना है, इजी रखना है, और एक तरीके से जो हम गॉड मैन जिनको कहते हैं, जहां पर हम एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं कि मैं शायद ये कर सकता हूँ या मैं शायद आपके लिए वो कर सकता हूँ। ऐसी फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी है और लोगों को चीट नहीं करना है, लोगों को झूठ नहीं बोलना है। And the last one, do not intoxicate yourself. No, do not drink alcohol a lot. Do not take hash. Do not take drug. No, this thing. In Sunya practice, strictly no alcohol. We don't allow drinking alcohol during the practice of Sunya. Yeah. और जो पांचवी चीज है जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हमको किसी तरीके के नशे नहीं करने हैं। और नशे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फिर भले वो एक तरीके का ड्रग हो या एक तरीके का अल्कोहल हो जिसे दारू कहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। शून्य प्रैक्टिस में स्ट्रिक्टली मना है आप दारू का कंजम्पशन रखें। यस My body law today, sorry, I take a long time because there are many wrong practice in that law. Okay, so two things we need. Okay, to reverse counting, to practice your mind, observe of the sila, observe of the codes of practice. No, is to control your body. रिवर्स, और अगर इन सारी चीजों से हमें बचना है, एक तरीका है कि आप रिवर्स काउंटिंग करें, आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपकी जो है वो स्ट्रेट करें, और उसी चीज पर आप जितना हो सके उतना फोकस करने की कोशिश करें। और जब आप ये दोनों चीजें करते हैं तो आपकी जो शरीर है उस पर भी ध्यान रखें, और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ये जो 5 चीजें भी अभी सर ने हमें सिखाई है वो चीजें आप आसानी से कर पाओगे। यस प्लीज, अभी चूंकि समय भी थोड़ा सा पाबंदी से में है, तो क्या हम डॉक्टर सवेरा और सब लोग इस प्रैक्टिस को, चूंकि आज प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, तो क्या हम इस अवसर पर कुछ देर के लिए प्रैक्टिस में आ सकते हैं? Yes sir, so can we just have a small time, like can we practice Shunya practice right now with all the other Shunyatis present over here? You want to practice today? Yes sir, now if it is. Yeah. I think many people will come today for practice. Okay. So only thing is that okay. Now we can make some practice of Sunya today. I'll come back to the reverse counting. Okay, reverse counting. Avnish sir, yes, definitely we can do the practice now. No problem. Yeah. So maybe actually Avnish, maybe you can lead the practice. Okay, you have been teaching for you can talk in Hindi. Maybe we can do some reverse counting now. Yeah, maybe you can teach them how to do reverse counting. Maybe you can speak Hindi. सभी का स्वागत है। तो हम इस प्रैक्टिस को करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जितने लोग भी हैं उनसे गुजारिश है कि वो कुछ अपना माहौल कुछ इस तरीके से कर लें जहां पर हम आसानी से बैठ सकें। और यहाँ जैसे अभी डॉक्टर लिंग ने हमें बताया कि 3 चरण यहाँ पर हैं, तो प्रैक्टिस के लिए भी हमारे पास 3 चरण हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम अपने शरीर के लिए अपनी बॉडी को कुछ स्ट्रेच करते हैं जिससे हम कुछ समय के लिए बैठ सके।
और मुद्रा भी जुड़ सकते हैं। दूसरा जो फेज है जो मेरी समझ में आता है और जो हमारा ये एक्सरसाइज है जहां पर हम अपने हाथों को भी यानी कि अपने शरीर को भी मूवमेंट देते हैं और जहां पर हम रिवर्स काउंटिंग के माध्यम से 1 मिनट प्लीज। जहां पर हम अपने मन और शरीर को समझते हैं, जब हमने अपने हाथों को जिस तरीके से गोलाई में लिया और उस पर कुछ हल्का सा महसूस किया, तब हम अपने मन और शरीर के बीच का जो कनेक्शन है उसको, जो उसमें तारतम्य है, उसको हम समझते हैं और बहुत आसानी से मन और शरीर हमें समझ में आ जाता है। और उसके बाद फिर हम अपने शरीर को स्थिर कर देते हैं और रिवर्स काउंटिंग करते हैं। जब हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं जैसे डॉक्टर लीम ने बताया, तब हम अपने स्थिति में आ जाते हैं और वहां पर हमारे शरीर के अंदर जो संवेदनाएं हो रही है उसको हम देखते हैं, जो विचार चल रहे होते हैं उनको सिर्फ हमें फोकस करना होता है और अपनी रिवर्स काउंटिंग हमें करनी होती है। जितना अच्छा हम अपने रिवर्स काउंटिंग को करने लग जाते हैं उतना हमें बेहतर होगा। तो यहाँ मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि हम यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग जो योग का बेहतरीन कुछ तो यहाँ हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित कर ले। यहाँ हम तीनों प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर अभी एक्सरसाइज के रूप में हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। तो पहले प्लीज हेल्प मी टू एक्सप्लेन। यस सर, इंग्लिश और हिंदी शुड आई गो? इंग्लिश में या हिंदी में, किस तरीके से? English, I think all of you understand Hindi. I can understand. Don't worry. Just speak the accent and nobody could translate for me. Continue, Avnish. Yeah, continue. ओके, अवनीश सर एक्चुअली हिंदी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं तो इट्स ओके। तो यहाँ कुछ एक्सरसाइज हम अपने शरीर के लिए करेंगे। हम सबसे पहले शरीर को कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन समय कम होने की वजह से और अभी सेशन और अभी सवेरा जी, रफीक जी, बहुत सारे लोगों को हमें सुनना है जो सभी क्वेरीज हैं इस विषय पर हमें थोड़ी सी बात करनी है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस इसका मेन पार्ट है। तो यहाँ हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन किया, अपने पैरों को थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश की और आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मेरे साथ अभी समथिंग इज रॉन्ग विद मी टुडे, बट परिस्थितियों से बाहर निकलना ही ध्यान है, तो ये परिस्थितियां आती रहेंगी। अवनीश, मैं यहाँ इंटरवीन करना चाहूंगा। अवनीश, इसे सिंपल रखें, प्रैक्टिस का एक अलग सेशन रख सकते हैं। आज ये मौका है डॉक्टर लिम के साथ बात करने का, तो प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के जो बीज है, मतलब रिवर्स काउंटिंग, उस पे हम जाते हैं। उसकी प्री एक्सरसाइजेस शून्य की और पोस्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। अब हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे 9 to 0। आप उसको लीड करो, ओके? तो शुरू करें? यस। तो थोड़ी देर अपना बैठ जाइए। आप आसान सी मुद्रा, जिस मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं, है ना, उस मुद्रा में बैठना चाहिए और आपकी कमर थोड़ा सीधी हो, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। जितना कमर हमारी सीधी होगी, जितना मोमेंट हमारी बॉडी में कम होगा, उतने हम विचलित कम होंगे, उतना हमें रिवर्स काउंटिंग करने में और अपनी ब्रीथ को संभालने में आसानी होगी। और ये ब्रीथ को संभालना, रिवर्स काउंटिंग करना भी एफर्टलेस, जो बिल्कुल रूटीन में होना चाहिए, वो डॉक्टर लिम ने हमें बताया। समथिंग इज रॉन्ग विद मी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं अमीश, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जी जी जी,
ठीक है। तो दूसरा रिवर्स काउंटिंग बहुत ही इजी है। हमें अगर करना है तो हमें जस्ट अपनी सांसों पे नजर रखते हुए, और जब सांसें अंदर जाए और बाहर जाए, हाँ, उस पे नजर रखते हुए हमें गिनती करनी है। और गिनती कहाँ से करोगे? मन से। मन ये ध्यान दे सकता है। अगर हम इसको कोई विषय दे, किसी चीज पे उसको नजर रखने को बोले, तो वो कर सकता है। हमारा फर्ज है कि हम उससे ये करवाएं। जब सांस अंदर जाएगी और बाहर आएगी, इस प्रक्रिया को आपको देखना भी है और आपको अपने मन को उसको गिनने भी लगाना है। लेकिन खेल यहाँ ये है कि आप गिनती आगे की तरफ नहीं, आप पीछे की तरफ करोगे। सो 9 से लेके 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक पहुंचना है। और यही प्रैक्टिस है, ये हम अभी अवनीश जी के साथ करेंगे। ओके, स्टार्ट। बैठो आराम से और सांसें जैसे अंदर जाएगी गिनना शुरू करना। मैं पहला गिनूंगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और हो गई हमारी प्रैक्टिस। इतनी आसान और जबरदस्त प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद हमारे जो एक्सरसाइजेस है, कि मेरे हिसाब से अवनीश आने वाली कुछ सेशंस में आप उनसे जुड़िएगा और जरूर वो बताएंगे। तो ये मौका हम नहीं मिस करना चाहते। डॉक्टर लिम भी हमारे साथ है। तो डॉक्टर लिम, पहला अभी मैं हिंदी में ले लूंगा ट्रांसलेशन, डॉक्टर लिम के साथ थोड़ी सी बातें करेंगे और कुछ सवाल भी लेंगे, क्योंकि आज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे, योगा का डे है। और योगा की बात आती है, जो पतंजलि की तो बात आ ही जाती है। सो डॉक्टर लिम, are you there? Yeah, I'm here. Yeah. Okay, so, no, I was just trying to explain that when you take today name about yoga, then there is a very famous scholar from India, especially from Takshashila. His name was Patanjali, and he made up the whole Yoga Sutras, and also he came up with the Ashtanga Yoga, the eight of yoga, and in which what you're seeing is exactly what he was teaching. He talked about yama, niyama means the ways in which you talked about Panchashil. You talked about controlling your body. This is exactly what happened. But unfortunately, yam, niyam, asan means the posture. They got stuck there, and only at the third level they're getting into postures. So yes, we move beyond that. We move beyond the postures. You saw even Avnish was struggling with explaining the postures, because the core and the essence, depending on the time, is very important. The practice is simple. It can be simplified. It can be done. So, Doctor, your views on the simplified practice, not because the mind is creative. Mind can create, and this creation is, then this creation itself becomes its recreation. The mind creates and it enjoys its own creation. So what is your take on the very creative concepts of yoga that are existing today? Yeah, just like talking about the Patanjali, everything there, the true yoga. Okay, this thing, and of course, they talk about morality, talk about control your body. This thing, this part of the yoga practice. Okay, today I do not go into this because we have been talking about reverse counting for the past 2 years already. Okay, so maybe we expect all of you by now should have what they call know how to practice the reverse counting. Okay, so today I do not go much into the practice, but after this, Rajesh, maybe we will come up with a 3-day practice. 3-day practice for India,
then we will sit down, we will practice it properly. Today, we just talk about the concept of this, what they call this yoga. Because the yoga in India is completely destroyed by Nim and Form. Nim and Form, Nim and Form destroy everything, So now we have to throw it away, throw it away, and pull it back, and give back the true yoga to India and back to the world. So maybe yeah. अभी जैसे डॉक्टर लिम ने कहा कि योगा का जो आज रूपांतरित आप रूप देख रहे हो, ये नाम और रूप इसकी वजह से इतना अपने मेन ध्येय से विचलित हो चुका है कि आज योगा का जो सही मायने में जो समझ थी हमारी कि एक यूनियन जहां हम लोग एक होना चाहते हैं इस संसार के साथ, ये अपने आप के साथ, अपने कर्मों के साथ, तो ये कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। और अब वक्त आ चुका है कि हम सही योगा जो हम हमारे ही धरोहर है, जो किसी कारणवश जब यहाँ से जब हमारे देश में कहीं ऐसी हलचल हुई जहां से ये योगा हमारा जो बिगड़ना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका बैकअप था चाइना में, और इस चाइना से हमें डॉक्टर लिम वापस हमें हमारी धरोहर वापस लौटाने आ रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि शून्य के माध्यम से, अभी शून्य हमने काफी साल से प्रैक्टिस किया, रिवर्स काउंटिंग काफी सिंपल है, उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे और उसी से हमारी जो अल्टीमेट एम है, जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हमें मिलेगी, सुख शांति और समृद्धि, ये हमारे को आराम से प्राप्त हो जाएगा। सो डॉक्टर, आई थिंक वी कैन कीप दिस सिंपल, वील हैव अ 3-day कैंप, 3 दिन का हम कैंप भी करेंगे और उसमें हम काफी डिटेल में इसके बारे में बातें करेंगे। तो आज के लिए तो योगा के दिन है, इंटरनेशनल योगा डे है, ये बात समझ लो कि सही मायने में योगा है देखना अपने साथ जो हो रहा है, जो संसार में हो रहा है, और किसी तरह इसे मैच करना है, ये मैच करते हुए हमें एक आना है। So doctor, I just simplified that and told them about it. So we can keep it simple and let it be simple, because I think that is the most powerful tool, simplicity. You see, just now, after let's talk about pre-sunya. Before the sunya, you prepare the body. That is good. Prepare the body. Okay. Then after that, you reverse the reverse counting. That's sunya. Then the post sunya. Post sunya, you rub your hand, you rub your face, this thing. So these are the pre-sunya, sunya, and post sunya. In case you do not have time, directly go to sunya reverse counting in the morning. Okay, this pre, this post is not important. What is important is the reverse counting. Please explain to them. Yes. जब अभी अवनीश जो सिखा रहे थे, ये जरूरी है, जब वक्त होता है तो हमें प्री शून्य, फिर शून्य की प्रैक्टिस और पोस्ट शून्य, मतलब शून्य के बाद वाली एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन वक्त अगर नहीं है, जैसे आपके पास 5 मिनट है, तो आपके पास वक्त नहीं होगा, लेकिन आप उस बीच की तरफ जाइए। शून्य प्रैक्टिस मतलब रिवर्स काउंटिंग, आप जाइए, वक्त निकाले, कहीं भी बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं कि जैसे अभी मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, तो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो। अगर वक्त है तो अच्छी जगह पे बैठो, पद्मासन डाल के बैठो, नहीं है तो जहां पे भी हो, लेटे हो, बीमार हो, किसी भी अवस्था हो, मन को लगाओ और रिवर्स गिनती करना शुरू कर दो। इस प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दो। ये छोटा 5 मिनट लगता है, बस 5 मिनट में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। यस डॉक्टर। Yeah. Now you see the aim of sunya, the aim of yoga. So in every school in India, they talk about avatar. Okay, they have the avatar guru here in Himalaya, this avatar, that avatar, but they never tell you how to become avatar. Yeah, so इंडिया में तो अवतार की बातें तो बहुत सुनी है। हमारे हर भगवान हमारे अवतार बोल के ही आए हैं इस धरती पे संभालने के लिए, लेकिन अवतार की बातें होती है, लेकिन अवतार कैसा बना जाए, कैसा हम एक ऐसे अवतार बने जाए जहां लोग हमारी भी कहीं रिस्पेक्ट करें, उसके बारे में बातें नहीं होती है। Yes, doctor. So sometimes many people tell me, so you union your mind and body. So when your mind and body is union, okay, what happened to you? You become avatar. As simple as that. मन और शरीर जिस वक्त एक हो जाता है, वही अवस्था एक अवतार की होती है। Yes, doctor. During the Buddha's time, some people come to see Buddha. They are disappointed. It's so simple. And they ask Buddha, how far can you go by practice the reverse counting? They are asking the Buddha. बुद्ध के समय पे कि लोग जब उनको देखते कि इतनी सिंपल और साधारण प्रैक्टिस, तो उनका यही सवाल था कि ये साधारण प्रैक्टिस से आप कहां तक जा सकते हो, किस पार जा सकते हो। Yes, sir. Buddha said, if you keep on practicing in 7 days,
Okay, in 7 months time, in 7 years time, you achieve a lot, you know. Okay, and the ultimate achievement is that you become avatar. This is from Buddha, not for me. बुद्ध ने यही कहा कि अगर आप इस साधारण प्रैक्टिस को रोज करोगे, नित्य करोगे, तो 7 दिन, शायद 7 दिन नहीं तो 7 हफ्ते, 7 हफ्ते नहीं तो 7 महीने, 7 महीने तो निश्चय ही 7 साल के अंदर आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम अवतार कहते हैं। Yes, sir. It's a very, very powerful practice. और ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। Doctor, I would like to add here one thing. Somebody asked me how powerful this practice is. I told him it's the same thing. You know, you take the curd, okay, and when you churn the curd, you get the cheese on the top. It's a simple practice, but the result is profound. So, I will just translate that. Yeah. This is exactly what the Buddha said. Okay, so you make into curd is churned, then you make into butter, then you make it again. Eventually, it becomes cheese. Okay, cheese is this thing. So that when you practice the right yoga, okay, you turn the milk to the cheese. Okay, so the same thing, you know. So when you practice this sunya, you make you from first make you into a good human being. You practice longer, then of course you become a free human being, you know. Okay, you can come and go freely. तो शून्य की प्रैक्टिस सही मायने में मंथन की प्रैक्टिस है। मन को मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आपका अस्तित्व अगर आपको निखारना है तो ये मंथन करना जरूरी है। कोई भी चीज अगर आपको, जैसे दही में से आपको मक्खन निकालना है, आप एक ही डायरेक्शन में घुमा नहीं सकते हो। तो ये मन जो आगे की तरफ भागने की कोशिश करता है, इसको आपको आगे पीछे करने की जरूरत होती है। कभी भी हम लोग पीछे की तरफ नहीं करते। तो ये रिवर्स प्रैक्टिस, ये मंथन की प्रैक्टिस है। इसी से आपकी जो अंश में छिपा हुआ आपका जो प्रॉस्पेरिटी के बीज है वो निखरना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए ये मंथन जो क्रिया है, शून्य की प्रैक्टिस, ये एक्चुअली मंथन की प्रैक्टिस, ये आपको निखार देगी। और आपको निखरते निखरते आपको पता चलेगा, आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और समृद्ध भी मिलेगी। यस डॉक्टर। Yeah, today we spend a lot of time to talk about yoga, because today is a yoga day, you know. So you want to practice yoga, make sure you understand what is yoga before you practice it. तो आज के दिन हमने काफी बातें की योगा पे, क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है। लेकिन कोई भी चीज प्रैक्टिस करने के पहले उसको समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए योगा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, वरना कहीं हम आगे निकल जाएंगे, भटक जाएंगे और फिर शायद मुश्किल हो जाएगा वापस पीछे आना। यस डॉक्टर। If you do not understand yoga, you'll be easily, you know, misled by those guru, those baba, and this thing, you know. Misled is never mind, you know. Sometimes people become their slave, you know. Emotional slave, enslaved people. That's the worst case that we have seen in many cases. अज्ञान आपको ज्ञान की तरफ नहीं लेके जा सकता, इसलिए अज्ञानी इंसान में पहले तो ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। वो कैसे होगी? आप सवाल पूछो। आप अगर नहीं पूछोगे तो आपको भटकाने वाले काफी लोग मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई सभी भटकाते, लेकिन भटकाने वालों की नंबर जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करो, योग क्या है ये जान लो, और उसके बाद आप अपना चॉइस खुद कर सकते हो। यस डॉक्टर। So after Rajesh, I think then we have to go for the practice. The practice is everything now. Without practice, you cannot understand anything. So practice, I agree with Afnis now. Actually, we should do some practice now, this thing. So today, sorry for all the wrong, what do you call this, wrong, long discussion, you know. Okay, today, because we want to make the view right, you know, right view. So when the view is right, everything is right, you know. When the view is wrong, everything is wrong. That's true. Right view. Yeah, so सच मायने में ये बातें करने की जरूरत भी नहीं है, ये इतना डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है। अवनीश जो कह रहे थे वो सही है, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए भी क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और इसी वजह से काफी बातें होती है, ये क्यों के लिए होती है, किस लिए, वजह क्या है। यस डॉक्टर। So today we only talk about the mind and body, you know, and now we're talking. Okay, so ourselves and the environment and the consciousness and the supreme consciousness. I think we leave to the next to be continued. Anyway, it's too long. Yeah. योगा के 3 चरण जो डॉक्टर लिम कह रहे थे कि पहला वाला जो है जो हमारा शरीर और मन, इनके दोनों का यूनियन। दूसरा वाला था ये शरीर मन जब एक हो जाते हैं तो इसका और इस संसार के बीच में हमारा यूनियन, यानी योग। और तीसरा जो है जब संसार और हमारा जब यूनियन हो जाता है, यानी योग हो जाता है, तब हमारा और एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो सब जगह है, ऐसी आप कॉन्शियसनेस के साथ जब आप एक हो जाते हैं, ये जो सुप्रीम योगा, ये तीनों का जो मेल है,
ये हम इस पे बातें करेंगे। आज तो सिर्फ हमने मन और शरीर इसके बीच में, पहले आपके अंदर एक यूनियन हो जाए, इसके बारे में बात किया है। पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा इसके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे। यस डॉक्टर। Yeah. So today we thank you very much for Paila, no, to do such a difficult this thing. Also you are this thing because translation is more difficult than speaker, no. Good, you have to listen and translate, no. You have to spend double the effort. Paila, we should let people to translate for 45 minutes. So today Paila already go for 1.5 hours to 2 hours, no. It's already double cheaper to work, no. So we should say thank you very much for Paila, yeah, for translating my speech. पहिला शुक्रिया आपका, आपने आज बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया डॉक्टर लिम का स्पीच का। और अक्सर तो सिर्फ 45 मिनट ही इंसान ने ट्रांसलेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेटर का काम है सुनना भी और फिर वो सुन के समझ के वही के वही वापस देना। तो बड़ी मुश्किल का काम होता है, और लेकिन पहिला जी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सो थैंक यू सो मच पहिला। Thank you so much, sir. It's always a pleasure. So I think for the practice, we are going to set up 3 days practice. 3 days practice very soon. Okay, maybe it started from July. Okay, then we have a 7-day practice. Okay, then of course eventually we have 21 days, 90 days practice. तो जुलाई से हम एक 3 दिन का रिट्रीट करने वाले, वर्चुअल रिट्रीट ऑनलाइन, डॉक्टर लिम वहीं से हमें गाइड करेंगे। 3 दिन का हम लोग प्रैक्टिस वाला ये करेंगे, डिस्कशन कम होगा लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा होगी। उसके बाद हम 7 दिन का और उसके आगे बढ़ते बढ़ते 21 और 90 दिन का भी करेंगे फ्यूचर में। In Latin America, they are very ambitious, no? First they go for 21 days, now they go for 90 days. Wow, they go very far down. लैटिन अमेरिका में पहले उन्होंने 21 दिन का प्रोग्राम किया रिट्रीट, अब 90 दिन का रिट्रीट तक पहुंच गए वो। तो बहुत आगे, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हो। That's good, but now we want to go for the 3-day retreat, not whole day, you know. Normally 1 hour in the morning and 1 hour in the evening. जब मैं 3 दिन की बात करता हूँ रिट्रीट की, तो ये सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, 2 ही घंटे की बात होती है, 3 दिन कंटिन्यूस। Then in between you can do whatever you want to do. In the morning we only practice, then in the evening we go for discussion. और बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं। सुबह के 1 घंटे में प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप अपने काम पे लग जाओ और शाम को वापस 1 घंटा डिस्कशन होगा। Then the 7 day is very strict. 7 day, then we have to 5 hours a day, you know, 5 hours one day to meditate, 5 hours a day. जो 7 दिन का कैंप होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, इसमें 5 घंटे का मेडिटेशन होगा और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। And you take only 1 meal a day, you know, 1 solid meal a day. The other time only the liquid meal. और खाने में आपको एक ही टाइम का खाना मिलेगा और एक ही सॉलिड मील, और बाकी आप लिक्विड फूड खा सकते हो। To control your body. वो भी एक तरीका है आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी पे ज्यादा लोड नहीं देना चाहिए। In Sunya we do have fasting, you know. We do fasting. That is taking 1 meal a day. That is the way you cannot cheat, you know. You take only 1 meal a day before noon, you know. Okay, that's the best way to fast. You cannot cheat. Because some people they fast in the day, but they eat throughout the night, you know. This is not fasting, you know. Okay, but take 1 meal a day. That's all. That is a good fasting. और शून्य में भी हम बैलेंस फास्टिंग करते हैं। हम कोई टाइप का टॉर्चर नहीं करते। दोपहर के पहले 1 टाइम खाना खा लेते हैं, और यही टाइप का हमारा जो उपवास होता है ये बैलेंस उपवास है, और ये भी हमारी प्रैक्टिस में आएगा, शून्य की प्रैक्टिस में। यस सर। So today is the advertisement for the future session. Okay. So I think Rajesh, maybe we'll open up some Q&A. Okay. Yeah. Somewhere you can. Paila has some rest, so you can take the thing, so you can do some translation. तो आज काफी लंबा बात हुआ है, तो हम अभी सवाल जवाब के लिए पूछेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे IMDb रफीक जी, आपके पास कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। हमारे साथ प्रोफेसर भी जुड़े हुए हैं। आप अभी द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आपको कोई भी सवाल हो डॉक्टर लिम से पूछ सकते हो, और आप सबको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर राजेश। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सो आज का जो दिन है बहुत बेहतरीन दिन रहा। 7 बजे से उठकर नहा धोकर बैठ गए सुनिया के लिए। और डॉक्टर लिम ने बहुत जो चीज बताया ना, जो 3 चीज है जो हमारा योग का, जो पूरा योग का एक डिस्क्रिप्शन 3 स्टेप में किया। एक पहला जो है खुद से कनेक्ट करना, सेकंड जो है बाहर का दुनिया से कनेक्ट करना, और थर्ड जो है हमारा सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट करना। ये जो 3 चीज है योग का मूल रहस्य है, और ये 3 चीज सिर्फ ये शून्य में ही हम हासिल कर सकते हैं, बिकॉज शून्य में सिर्फ
माइंड का प्रैक्टिस नहीं, इसका जो प्री सेशन होता है ना, ये ऑलमोस्ट योगा की तरह होता है विद हैंड स्विंग एंड एवरीथिंग। ये जो कर रहे हैं ना, ये आपका बॉडी को भी एक रिलैक्सेशन देता है, फिर माइंड को भी रिलैक्सेशन देता है। तो एक बेहतरीन एक मिलावट है, मिलावट करके ये जो माइंड और बॉडी को एक बेहतरीन तरीके से लेके जाने के लिए ये योग का बाप मैं बोल सकता हूँ डॉक्टर। Yeah, so Dr. Rafiq ji, you have any questions? For me, yeah, doctor, now, so as you said, I think one day we should have this session for the pre-Sunya session also, so that way we can show the hand swing and the stretch exercises. I think that will be more beneficial for our viewers. Zarur karenge, Rafiq ji, zarur karenge. Yes, 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 we'll do that. Anybody else having any questions? Yeah. There will be some stuff. I'm going to introduce some important exercise, very easy to practice. Okay, but actually there are some. I don't want to talk to too much exercise now because people may get confused now. So that's why in the first step we focus on the reverse counting. But after that we are going to introduce in some very simple exercise you can do at home that can circulate your body, that can circulate your energy. Yeah. और So आप सभी इंफॉर्मेशन www.shunyati.org पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ये वेबसाइट है स्पेशली शून्य प्रैक्टिस के लिए। shunyati.org में आपको ऑडियोज मिलेंगे, ऑडियो विजुअल्स मिलेंगे कैसे प्रैक्टिस करनी है, प्लस वहां पे ऑटोमेटेड सर्टिफिकेशन डाउनलोडिंग भी होगी। आप अपनी मीटिंग करो और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो। Dr. Savera, few raised handed. They raised their hands, so I'm going to unmute them. Yeah, Yes. Mr. K. Janardhan Jana, please ask your question, sir. Unmute your mic. Good morning, Dr. Lim. Yes. Very good morning, Doctor. This is Janardhan Success Jana from Chennai. Yeah. Great, Doctor, great. We are day by day, we are improving, Doctor, because I am attending all your speeches, all your practices all over the world, even Latin America, whatever the time, in the night, midnight, I am there. And of course, with your kind blessings, I have given about 3 practices where I was in Colombia too, and Nigeria, everything I have given. And same thing, as you said, India is going to be #1, of course, all over the world there. With your kind guidance, we are daily practicing, Doctor. Thank you very much. And in the meantime, I want to convey my best regards to our great Dr. Rajesh Savera, and of course our IMD Mr. Rafiq, and what you can say, Kumarji, and everyone. We are be with you, Doctor, and we want your guidance. As you said, I have attended about, Doctor, when I was in Dubai, about 3 kind of meditation, which I paid the money, and I am realizing now I wasted my time. Now, Doctor, just for the last 8 months, I am practicing Sunya, and believe it or not, Doctor, it is fantastic, fantastic. Everything is changing. I am, of course, Doctor, you blessed me. I am now 71 years younger. You blessed me on that day. That is the first blessing. I got it, of course, with all my friends, everything. Doctor, this is a very good Sunya movement. We will make the world #1 from Sunya. Everybody behind with Doctor. We are at your service, Doctor. Thank you very much for every of my Sunyati brothers and sisters all over the world. Thank you very much, Doctor. Thank you. God bless you. Dr. Lim, long live Dr. Lim. Thank you, Doctor. Thank you, Mr. Janardhan. Thank you. So Yeah, I'm going to unmute Divya Jyoti Mukherjee. Yeah, please. Yeah, good morning, sir. Good morning, sir. This is Professor Devjyoti from Bhagalpur, Bihar, India. It is so enlightened. Your topic was so, made to be understood to everyone. And I have enjoyed that. Let me tell you that I have been practicing Raj Yoga or Vipassana, what you call, for last 10 years. In that case, only 10 to 20 minutes I used to do. Sometimes I leave also. One thing is that when you are practicing Raj Yoga, Vivekananda used to do that. You are just observing your breathing. It goes in through Saraswati Nadi, Ila, Pringala, then it is come to Shushumna Nadi, then it goes out.
That time, what I have to observe, that thought will come in your mind. They will do their own. You don't need to give importance that thought. They will come and they will go of itself. You give your full concentration on the thought. On the contrary, what you are telling, give work to your mind. That is your reverse counting. But I observe you very, very minutely, and I observe you very minutely. So when the difference is, what is the importance of giving work to the mind, or what is the importance of not giving any work to the mind while practicing this yoga? This is my question. Yeah. As I say, mind is not your friend. Okay, mind is a very dangerous being. Okay, mind is not ourselves. We are, mind do not represent us. Okay, mind is just the activity of your brain, of your this thing. That's why even in the Raj Yoga, okay, you should not control by your mind. You just see it, see like watching television, okay, let it come, let it go, let it come, let it go. That's what you're saying now. And in Sunya, it's exactly the same thing now. In Sunya, we are practicing the same things at what you are practicing in the Raj Yoga. Okay, let the mind come, let the mind go. Okay, the only things that you have to be very careful. Okay, if we are not careful, then some people, they try to associate with the mind. Okay, you think that is something wonderful, something magical, this thing. Then they started to practice on the mind. That's the wrong practice. Practice on the mind. Then they try to magical power, try to superhuman to the mind. That is wrong practice, because all the magical power will come automatically. When your mind, when your brain is not disturbed by the mind, all the power will come. All the power will come. Okay, this thing. Just now, they're saying that they did my pressing. No, pressing not for me. Pressing actually from our supreme consciousness. This thing. Today we do not have time to go into the supreme consciousness. So you go to the Raj Yogas, the same thing now. They're talking about the supreme consciousness, highest consciousness. This thing. So all the yoga is the same, It's the same. They will come to the only problem is that many guru, many baba, they twist and turn, they add a lot of masala, they add a lot of spices into it, they put in the name, they put in this thing, then they claim themselves as Mahaguru. Okay, then you have to follow their way, follow this thing, donate money to them. My goodness, these are the ones who deviated, the yoga. So you look at India, you look at Patanjali yoga, you look at the Raj yoga, you look at all the yoga. When you go into the study, it is the same as Sunya. It's the same as Sunya. Okay, but Sunya, Exactly. I have understood. Now my question is slightly different. That you are telling that you're out of that 5 hindrances, your mind is also a hindrance. So why to indulge mind in that discussion? Why to indulge mind? Why to give work to the mind? If it is hindrance at all, let me finish that. If it is hindrance at all, then why give importance to that? You don't give, you ignore that. You ignore mind. You give concentration to breathe itself. You observe it. You calmly observe it. You see it goes in it. You cannot control that when it is coming in left side or from right side or from both sides. It goes into that. It elaborates you. It gives you entire enlightenment. And after doing that, it comes out. You just observe that. Why you are indulging brain in that? Why you are indulging brain in that? Because it is hindrance. I am so rightly, you have so rightly said, and I am totally agreeing with you that brain, body, these are all hindrances. Even feeling are hindrances. Very good. I am enlightened on that. But why give interest to that? Why you are indulging unnecessarily? Why you are poking mind's nose in it? No. We don't put. Why you say that we putting something on the mind? No, nothing. Sunya means zero, nothing. Okay. So your understanding is something wrong. Then why reverse counting? We don't deal with mind. We don't. Actually, at the end of the day, is to realize the supreme consciousness. Supreme consciousness is not your mind. Your mind is a hindrance. Okay, you go to the Raj Yoga carefully.
I have studied Raj Yoga before. You study carefully, Okay, it's exactly the same teaching, exactly the same teaching. Okay, we will go into the supreme consciousness, and the supreme consciousness is always there, It will not be born, it will not be destroyed. It's always there. It will not be born, it will not be destroyed. It will not increase, decrease. Okay, it is not holy, it's not dirty. This is the supreme consciousness. But it's very difficult to describe, I just thought it's a third level. It's the Raj Yoga go very high level. You go to third level, okay. You do not directly go to the Raj Yoga when you practice yoga. Because then it's better that in Sunya, it's better that we define yoga. Okay, we define what to practice, okay, what to expect, what the 3 level is. So this kind of systematically we lead the people like from the primary school, from the secondary school. It's not people directly go into high level yoga. Okay, if you don't have this, many people they go astray, they go extreme. That's what we want. Okay. Thank you, sir. Thank you for enlightening me. Thank you. No. Thank you. No. Thank you. Okay. So, Doctor, So, thank you, Divyajyoti ji, Mukherjee ji. Now, Mr. Kabir Dhingra, please ask your question, sir. Good morning, Dr. Lane. Good morning, Dr. Savera. Wish you all a very happy International Yoga Day. A wonderful program organized. Thanks to Avnish for giving birth to this interesting program, and thank you to the Indian management for supporting us. Doctor, there's a very simple question which many people would like to ask, because if you actually see, this is the pandemic time and people are waiting for the 3rd wave of COVID. So if you actually see, people are more concerned about their health and their holistic health. So the question is, where on one hand, we are promoting DXN products, which helps in detoxifying the body and building the immunity. On the other hand, when we add Shunya to it, when we add reverse counting to it, do you think people will recover faster and they'll be able to fight their disease and disorders and the COVID naturally and in a better way? Definitely not. What we call, we have seen many cases today. So Shunya is a right way to fight disease. Definitely, we have seen a lot. We've seen a lot. Okay. Now, I have put up a few series on virus now. Okay. Now the problem is not the virus. No, you don't deal with the virus. No, you deal with the virus A, you deal with the virus B, you deal with the virus C. It never stops this thing now. But there's only one thing never changes: your immune system. Okay, your immune system deal with the virus. It now. So by practicing the Shunya, you regulate the body. When you regulate the body, your immune system will stop. Okay. You see, before you catch flu, for the past 50 years I travel around, you never see me catch any flu. Because why? When you practice Shunya, before the flu is coming, you already feel it, something is wrong. Something is wrong. Then by regulating your breathing, by resting, then the symptom are gone. Okay, so that this is a good way to fight the pandemic. Actually, Shunya is a very powerful tool to fight the virus. Yeah. Dr. Rajesh, can you please translate in Hindi for the benefit for the masses? Yeah, sure. I think, Kabir, you are very good in Hindi also. You can do that. If it comes from your mouth, it will be more better. Okay. नहीं, जो कबीर ने सवाल पूछा है, बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है कि शून्य और जो हमारा DXN के प्रोडक्ट्स, इनका कोई तालमेल है या नहीं है। बहुत बड़ा तालमेल है, क्योंकि जब शरीर, जो हमारा मन है, मन ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही अभिज्ञ अंग है, और यही मन जो है ये जागृत रहता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये इम्यूनिटी की तरह अपने काम करता है प्रोटेक्शन का। जब ये मन एक ऐसी अवस्था में जाता है कि वो शुद्ध हो जाए, एकदम प्यूरिफाइड हो जाए, तो ये जागृत होने का उसका जो आदत है वो और भी अच्छा हो जाता है, वो और अच्छा प्रोडक्टिव होता है। और उसको अगर शरीर का क्लेंजिंग मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का साथ मिल जाए, मतलब वही बात है कि मेरे दुश्मन को मारने के लिए मेरे सामने जो झाड़ियां है वो कट जाए, तो मेरा दुश्मन मारने का जो मेरा सोल्जर है वो बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है। तो यही काम है शरीर और मन का दोनों का साथ होना। इसलिए DXN और शून्य दोनों का साथ होना इस कोविड टाइम्स में तो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कबीर, थैंक यू कबीर जी, थैंक यू डॉक्टर लिम, थैंक यू डॉक्टर सवेरा। डॉक्टर SK Misra from Kanpur, please ask your question. Sir, good morning.
Morning. सबसे पहले तो डॉक्टर लीम को मेरा कोटि कोट नमन। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपसे बातचीत हो रही है, और बोध गया में ही हम लोग मिले थे शून्यता में। और सर मैंने कई लोगों को शून्यता प्रैक्टिस भी मतलब इधर करा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी किमोनो का मैंने ऑफर भी लिया। कुछ लोगों ने मेरे से किमोनो मांगा भी था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, तो उनको मैं किमोनो ला के दिया, तो उसमें मेड इन चाइना, तो वो लोग बोले कि तो चाइना का है, मैं इसको नहीं लूंगा, और उन्होंने मुझे वापस कर दिया। तो सर हमने उनको ये बताया था कि हमारा सिद्धिपेट में है, हम किसानों को मतलब कपास की खेती करवाते हैं और हम खुद बनाते हैं, लेकिन जब उसमें मेड इन चाइना देखा तो वो लोग थोड़ा सा भड़क गए। तो यही मेरा क्वेश्चन था। So, doctor, can I answer this question? He really wants to thank you because he said that he met you in Bodh Gaya, and after that he was very much interested in practice of Shunya. He taught a lot of people Shunya, and then people were asking him about the kimono, the first set of kimonos that we had brought. He also gave them to these people, and when they saw the label made in China, they felt a little disturbed, and they returned back the kimono, saying that, oh, this was not what the purpose was. It was supposed to be for the people of Telangana. So if you want, I can answer this question. No, kimono is not belong to China. Even you go to the ancient India, Indians also wear kimono. Kimono is a very ancient dress. It exists in India, China, even Nepal, even Japan. No, this is not a Chinese dress. Okay. तो यहाँ पे डॉक्टर साहब, जो किमोनो है ये भारत की ही संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। शुरुआत में जब हम ने ये प्रोग्राम किया था, आपको पता है हर किमोनो के पीछे $10 ये तेलंगाना फार्मर्स के लिए रखे जाते हैं। तो शुरुआत में जब ये विचार आया था, और पहले तो हमारे इंडिया में कोई बनाने के लिए तैयार नहीं था, हमने काफी ट्रायल भी किए थे और काफी फेल हो गए थे, तो हमने एक कंसाइनमेंट वहां से बुलाया, और आज की डेट में करीबन 30 औरतें इसे स्टिच करती है, और जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है शायद हमको 300-3000 लोग भी लगेंगे स्टिच करने के लिए, औरतों के लिए। तो जो शुरुआत हमने तब की थी, जो बीज हमने वहां से डाला था, वो आज हमारी एक धरोहर बन चुकी है, और हमारे ही फार्मर्स के जो कॉटन से बनी हुई हमारी ही औरतों ने बनाई हुई तेलंगाना में किमोनो अब अवेलेबल है। तो ये शुरुआत थी, इसीलिए वहां से आया। आप समझे मेरी बात, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास से गुम गया था, इंडिया में था ही नहीं, कोई नहीं पहन रहा था किमोनो। यहाँ तो चाइना और जापान में किमोनो पहने जा रहा था, जबकि हमारी धरोहर थी। So I was just telling him that in India nobody was wearing kimono, and that is why in the initial first lot we had to get it from somewhere, where people were wearing it, and that is why it came in from China. But after that, now currently 30 people, 30 ladies are stitching it. We are doing it. We have a mass production unit that is in Telangana, established in Telangana, that we have made in India kimono from the farmers of from the cotton, from the farmers of Telangana, stitched by the women of Telangana. Yeah. Rajesh, you look at the ancient painting of India. Some of the painting, very apparently they are wearing kimono. Kimono is an ancient dress, no? It's something that's wrapped around yourself. Okay, it happened in many places of the world, not only China. So ये भ्रांति निकाल दीजिए डॉक्टर साहब। अब अगर आप देखोगे तो काफी है। आप जाओ www.sifwrld.com पे, और आपको काफी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। ओके, थैंक यू। डॉक्टर राजेश, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जब मैं कुंफू की क्लासेस कर रहा था तो उस समय भी मैं किमोनो ही वियर कर रहा था। तो ये आज का नहीं है, बहुत ही पुराना है। और ये जो बताया डॉक्टर राजेश ने कि जब चाइना से हम इसको लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे लोग बना नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। जब एक बार यहाँ समझ गए, नाउ इट इज इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, और ये इंडिया का ही ड्रेस है जो बाकी लोगों ने तो अपना लिया। अब हमारे पास वापस डॉक्टर लीम से जी लेकर आए हैं। Yes. So I'm going to unmute only 3 people, they raised their hand. Then after that we will not taking any questions. Mr. Ashok, please unmute your mic. A very good morning, DXN, Dr. Lim. Morning. I'm very happy and excited to talk to you. And I just like to tell you, I was in the Bihar, 3,000 people with 3,000 PPE at the first time I saw you, and I went to my team, and team was very excited. And second time with the meditation program, they feel just like you are just like
you know, what a magical thing. Just like some people's my teams feeling like a Buddha. You are just when you are sitting on the Buddha Gaya temple there. And third time, we are very much awaited for the March program in the Nepal. Basically, I'm from Nepal. We are waiting for the March program in the Nepal, but because of some reason, either Corona pandemic, it's what stopped. So I like to ask you the most important thing: when will be our Shunya program available in Nepal, sir? We are very much awaited. We already bought a ticket, but program is not done, and it's more over the 1 year. You know, over the 1 year. Nepal is waiting for you, sir. We are very much excited to see you here in the in our country, the birthplace of the Buddha, exactly Lumini. We are waiting for you. Yeah. I think you are right now, because many Nepali remind me, they say Buddha is Nepali. So definitely we go to Nepal. Last time actually we supposed to have a huge gathering in Lumbini, okay, but due to the outbreak of COVID, now we cancel the meeting. Okay, then after that, I think in Nepal, so many of you also started to have the kind of 1 week, 1 week training in Nepal. I think Nepal is the only country where regularly we are having this 1 week retreat. But after that, due to COVID, also stopped. But never mind, now we are going to use this online training. Okay, next time we will link. We will link to Nepal again. Okay, so maybe we have a 3 days training. Okay, so that time we will talk in the Nepali and Hindi, so that people can practice now. So definitely we will not forget Nepal. Okay, we will not forget. We will go to Nepal. Don't worry about that. Okay. So thank you for the support. We are very much awaited for you, because MLM system is after 8 years it's opened here. We are very much awaited. Every leaders, they have to do very hard work for the DXN. They sacrifices many things. So we are very much excited to see you here, sir. You see, there are about more than 10,000 join DXN in Malaysia. Can you imagine that time? You see, at one time there are 4,000 Nepali come to our farm factory. Malaysia have a lot of Nepali. The thing. So Nepali actually is a very important force for DXN, especially like in Malaysia. In Malaysia, about 30% of our sales are contributed by the Nepali in Malaysia. 30%, 1/3, okay, 1/3 by the Arabs now, and 40% by the local Malaysian. Okay, then when you go to this GCC, Arabs, there are a lot of this thing. Then you go to this Europe, also a lot of Nepali join, and now in America. In America also there's a group of Nepali very active, this thing. So that we are going to set up a factory in Nepal. Okay, set up a factory in Nepal. Okay, then we are link the production of Nepal to the market. Okay, so Nepal be an important place for DXN. Don't worry, we will never forget Nepal. I will go to Nepal after the pandemic. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much for a beautiful answer, sir. Thank you so much. Yeah. विजय सर, विजय सर, हमारे बीच में काउंसिल मेंबर हैं मैक्सिको से, तो मैं उनको कॉल करना चाहता हूँ कि वो अनम्यूट करें विजय जी उनको, और वो इस वर्ल्ड योगा डे पर अपना विचार। फैबुला संचय उनका नाम है, फैबुला। Fabula, yeah, Mexico, yeah. Mexico, please come share some experience. Yeah. I am a little bit ashamed because I didn't speak too much English, but I'm gonna do my best. It's okay, we understand you. Did you want that I give you my experience about my meditation? Was about after the day that was the situation with Logo. I feel very bad, and the next day I went to a park to walk as every day, and I started doing my pre-exercise
Sunya exercise. And after I sit down, and the grass was a little bit dusty and too bad, no, because the park is not too good. And in the middle of that grass, grass, I saw a flower, a little flower, and I put my attention in that flower because I like more to do my counting river, my reverse counting with my eyes opened. No? I do not like too much close my eyes because I feel that I have more concentration. I don't know. And I put my eyes in that little flower, and I even didn't count 20 when suddenly everything came in alive. Yeah, with too much glitter, and what's really a beautiful experience. I feel with many hopes in this life and happiness, no? Too much happiness. Thank you. Your experience is very common in Zen, you know. We call it Satori. It's Satori experience, this experience. So there is a sudden realization, you know. Okay, sudden realizations. So suddenly the light becomes very brilliant. So the world, what we call, expand out, you know. It's kind of, and it is a beautiful experience where you can only experience through the Sunya practice. Okay, this is the expansion of consciousness. At that moment, your consciousness expand, you know. Then you can see the world. And it is okay. This is a beautiful experience. Okay, so maybe in one day when we have time, so congratulations. Okay, so your practice will go to one level up. Yeah, you're really beautiful that experience, and I can see that we have a lot of potential like human beings. Yeah, because this kind of experience is beyond language, no? It's beyond language because language is still a kind of form, an immanent form. Okay, so when you get up from nim and form, we go to kind of consciousness to rim. That one you cannot explain it, cannot explain with what you call with language. I still remember in my early day. The time I'm still thin, you know, after practice this Sunya, when I look at something, you know, okay, look at something with the eyes open, then after some time, the world suddenly become supreme quiet, you know, become very quiet. Then the color become very, very colorful, you know, the world become very colorful. Then we feeling extremely happy, serene, you know, this are the thing. So this one we call Satori. Satori, this experience is a good experience in Zen, you know. Okay, and many Sunyati, many Zen, they write a beautiful poem, you know. Try to describe what experience, but it's not easy, you know. It's a beautiful experience. I hope all the Sunyati keep on practice, so maybe you can get this experience. It is also come by itself, you know. You cannot practice for that. Okay, you relax yourself. It comes again and again. Yeah. I want to approach to ask you some thing today in the meeting here in Mexico. Somebody asked you about the exercises that you don't have to take the breath to your diaphragm. You don't want to breathe too high, no? But I remember that I heard that when we do raising hands, we can take that breath deeply. Raising hands only. Yeah. When you raise a hand, your lung expand, you know. So when you raise the hand, we breathe in. Okay. So when you put down the hand, okay, you breathe out. Okay, this is a thing. This is a basic exercise now. So you take in, you breathe in. When you press the hand, okay, you breathe out. Okay. Sometimes we expand the hand, you breathe in. You put the hand, you breathe out. So this is the basic exercise to circulate the energy in the body. Yeah.
And it's okay to take the breath to the diaphragm? Diaphragm? No, not necessary. Not Not necessary. No. When you practice Shunya, automatically the breathing will go to the diaphragm. When you practice it, automatically, no need to practice. No need to practice. Because why? When you practice Shunya, your mind becomes more and more serene. When more and more serene, the breast, the breathing from the chest, no, up and down, is very coarse, no. So your body will automatically slow down your chest, no. Okay. Then your diaphragm will take over. Your diaphragm will take over. Then eventually the breathing on the chest stop, but only the diaphragm, no, in and out, no. At the end of the day, the breathing can stop, no. The breathing can stop. Then you breathe through the skin. You breathe through the skin. So there are 3 stages of breathing. Okay. One is you breathe through the chest. No? Then after that, this come down, then you go down to the diaphragm. It is automatic, you know. No need to practice. You come. Okay. So when your mind calm, you know, you don't feel like breathe through the chest. Okay. You just let the diaphragm in and out because it's a very soft breathing, you know. Okay. In and out. No? Then after some time, even that breathing also stop, you know. Okay. Then you breathe through the skin. You breathe through the skin. That is that, but not easy, you know. Not everybody they can have the kind of experiences, but this is very easy. Youngster, those people at the age of 10, 15. I remember I did Shunya at the age of 10, you know. Okay, then the breathing stopped, you know. The breathing stopped. Oh, that time I'm really afraid now. I'm thinking, am I died or am I alive? No. Then I try to move my finger can move, and I'm still alive. Okay, it stopped, you know. Okay, but this comes naturally. No need to practice. There's some school, you know. There's some school they practice stop breathing. Okay, they force themselves to stop the breathing, you know, so they want to breathe through the skin. No, you cannot do that, you know. It'll come automatically. So the diaphragm breathing, believe me, you know, let it come automatically. No need to practice for that. No need to practice for that. Yeah. Because you need to observe your breathing. Don't interfere with the breathing. To observe the breathing so that you can absorb your mind. Okay, but if you practice diaphragm breathing, you practice all these things, you forget your mind already. Okay, so let it come naturally. Yeah. Okay, thank you very much. Namaste. Yeah. Namaste. Thank you, Ms. Fabiola Sanchez. Thank you, Dr. Lim, for giving a reply, wonderful reply. I hope that everyone get motivated, and also they have already cleared their doubts regarding the how to do the breathing and during the that is reverse counting. Sir, today we are going to take one last question that is from Mr. Rajiv Chandigarh. गुड मॉर्निंग डॉक्टर लिम। गुड मॉर्निंग आज का सेशन बहुत यूनिक रहा, बहुत अच्छा रहा। तो और योगा डे के ऊपर आपको थैंक्स कि बड़ी ग्रेट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली। तो सिर्फ एक माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन था कि 0 to 9 ओके, 0 to 30 ओके, 30 to above नो ओके। तो राजीव जी, क्या आप 30 से ऊपर में आपको दिक्कत आ रही है ब्रीदिंग में? दिक्कत आती है। Actually, Dr. Lim, what Mr. Rajiv is facing difficulty doing the reverse counting from 99 up to 29 to 0, that is Shunya, that is okay. But after that, increasing the counting is facing the problem. He is deviated from the countings. No need to worry, no need to worry. Reverse counting, there are three levels, no. 9 to 0, one level. 29 to 0, second level. 99 0 is to the third level. Okay, it's just a primary school, secondary school, and university. Okay, sometimes you found that university very difficult to do, then go back to the secondary school. Okay, so 99 to 0, no problem. No, never mind. Then you put 29 to 0, keep on practicing 29 to 0, 29 to 0. So after this thing goes smooth, and then maybe you can go to 49 to 0, then you go slowly, then eventually you can go for 99 to 0. Okay, so now you keep on practicing 29 to 0, 29 to 0. It's okay, no problem. Relax. राजीव, जैसे कि डॉक्टर लिम ने बताया कि शून्य को हम 3 लेवल में करते हैं,
that is 9 to 0, 29 से 0 और 99 से 0. तो अगर आपको 99 से 0 में दिक्कत आ रही है, तो जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, प्राइमरी में जाते हैं, देन उसके बाद हायर क्लास में जाते हैं, फिर उसके हायर क्लास में जाते हैं. तो अगर आपको 29 से 0 में कोई दिक्कत नहीं, इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहो, फिर इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाओ 99 से 0 तक. तो अभी घबराना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है, और प्रैक्टिस करने पे ही आप थर्ड लेवल की तरफ अपने आप ही ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे. Thank you, Dr. Lim Sejin. Thank you for giving such a wonderful reply. Already that is a few people, they already raised the hand, but there's a limitation of time. If you allow, then I can ask to Manjunath Pratkar. He will ask his question. Yeah. So last question for the today. I'm sorry for the other participant, so I'm not going to extend the time. Good morning, Dr. Lim, and yeah, please come. Yeah, good morning and hi everyone. So I already contacted you in WhatsApp. So my question is that for nearly 40 days I practiced 99 to 0. It's very good. Recently 3 days, from 3 days when I'm counting reverse, I'm getting blank. Like while reverse counting on 34, I jump directly. I don't know what is the last count and what next. Is everything is fully blank. So why it's happened? This is a good progress now. Actually, reverse counting is only the first practice. Okay, after you count something, two things happen. One is, like you say, the mind become blank. You cannot count anymore. Or sometimes the breathing stop, you cannot count the breathing anymore. Okay, then you must go for the second level of practice. You stop the counting. Okay, you just try to observe the breathing in and breathing out. No counting. Within, without. Sometimes the breathing is so small you cannot feel it anymore. Okay, then you try to observe the body. Okay, from your head, from your head, you try to scan your body, up all the way down. Okay, this thing, so that the blank feeling will disappear. The blank feeling will disappear. Okay. And I thought it's something problem like that. No, it's not a problem. It's a good progress. It's not a problem, because why? The reverse counting is to make you go into samadhi. What is samadhi? Samadhi means stop thinking, stop thinking. Okay, so when the thinking stop, how to count? You cannot count. That is a good sign. It's a good sign. That's why after there are 6 gates, there are 6 levels of practicing this sunya. The first level is the reverse counting. After the reverse counting, you enter into samadhi. Counting is no longer possible. You cannot count anymore because your mind already very quiet, very this thing, Then you try to observe the breathing. You follow the breathing in and out, in and out. After some time, the breathing also stop, The breathing also stop, or the become very minute. So you try to follow in and out, so you cannot follow, this is the thing. Then we try to observe the body. Observe the body. You scan the body, You imagine your body. There's a hair, there's a scalp, there's an eye, there's a nose. For the toe, scanning the body, This the thing. Then feeling that this body is not mine, this body is not real. This the thing. So that there's 6 levels, because 6 gates, Okay, but today we don't talk too much of that, We don't talk, because why? You tell people level 1, level 2, level 3, what happened? They directly jump into level 3, Okay, they don't want to practice level 1. No. We force them to go to level 1. So reverse counting. So after that, today I'm good that the last question is asked by you, Okay, you're talking about level 2 now. This thing. So when you count, you lost count, you cannot count anymore. Then it's not a problem. This is not a problem. This is different from confusion, Like some people count, they forget to count. That is confusion. When you count, you want to count, but you cannot count. You want to count, but you cannot count. That is not confusion, That is actually a kind of samadhi. Then you feel peace, you feel okay, you feel this thing. Then you try to observe your breathing. Breathe in, breathe out, breathe in, no counting. Breathe in, breathe out. Okay. Then sometimes the breathing also very, very small, The breathing also stop. Okay. And then you scan your body. You scan the body. The problem, many meditation school,
They really ask you to follow the breathing. They really ask you to scan your body. They really go to level 3, you know. They forget level 1, you know. They get nothing. Okay, but now you should go to level 2 really. Follow of breathing. Follow of breathing. And I also asked Rajesh, no? Rajesh, we are going to print out the sutra, the Maha Anapana Sutra. This is very important a book on the practice of the thing. So hopefully that we can also translate into Hindi and also the Indian languages now. Okay. Now I think today we make it this way. We are going to have this 3-day training. Okay. Then we can talk in details now. The practice now. What are this thing now? Okay. Your case is very common, you know. They cannot count anymore. Okay, there's one thing. But some people, they practice this thing and then they started having vision, you know. They can see things in other places. this thing. And some people, they see the angel, they see the many things. They go to the second level. We'll talk about that, you know, in a training. So I'm glad that today you asked this last question. No need to worry. I keep practicing, you know. This is a good progress. It's a good progress. Okay, thank you so much, sir. Thank you, Manjunath ji. Thank you, Dr. Lim Sojin sir. That is, you have given a wonderful reply, and also it's a very important question because the first step that Patrakar ji has experienced, and so that many more to come, this kind of the experiences to all the Sunyatis in future, and they will feel like that they will bring their question. That time to time we are coming into the Sunyati session, that is 3-day workshop that as promised by Dr. Lim that we are going to very soon we are going to conduct in July. दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने इस शो के अंदर आके और आज इस शो को से आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको आप स्प्रेड करेंगे, दैट इज पूरे अपने ग्रुप में, दोस्तों में, समाज में, और एक हेल्दी आप परिवार बनाएंगे, एक हेल्दी सोसाइटी बनाएंगे, एक हेल्दी कंट्री बनाएंगे, एक हेल्दी वर्ल्ड बनाएंगे विद डिएक्शन के साथ और साथ साथ शून्य करते हुए. थैंक यू डॉक्टर लिम सोजिन सर फॉर कमिंग इन दिस शो. Thank you very much, sir, and your blessings and your guidance that is given by today to all our participants. They will definitely get the benefited, as well as they can spread this Shunyati movement across their family, in their society, in the country, and entire world. So all world will be happy by doing Shunya. Thanks to you, Dr. Atuk Lim Sojin, for bringing this Shunya back to India. Thank you very much, sir. So we thank all the management thing, and also to organize this thing, and also my translator, Faila, and also this Rajesh. Thanks all of you. Okay, see you in the next session. Okay, see you then. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, doctor. So, इसके साथ में अवनीश जी, फैला जी, रफीक सर, as well as Dr. Rajesh Savera, और साथ में मिस्टर केपी राहुल, आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और मेरी सारी एंटायर इंडिया डिक्सन मैनेजमेंट टीम, साथ में डिक्सन के जितने भी लीडर्स हैं देश विदेश में और जो लोग देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि आज से ही शून्य को अपने जीवन में अपना लें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और डिक्सन का इम्यूनिटी पैक जरूर आप यूज करें, लोगों को यूज कराएं, और साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने जीवन में अपनाएं. इन्हीं शब्दों के साथ गुड मॉर्निंग, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.